जोहार तेही Santal di kena mai Bonali atau nit do Utturiya em kate lebon atang daramia ona lagi tin hoy kena mai Mercy Hemram nonda yu me ar ni atang daramem Nia tayong do ito abawa oka kami hurakan kabun ramka onalika burlaha dia ado nua legit ke lahasana kami bun laha dia Gabriel babu हमसे कौन थोड़ा सोसाइटी बाबत रे मिल बार कथा ले कते अब अरो कमी दुन लहा दिए अड़ी मानतान तिहिया मो सभारेन मारांग पेड़ा नोरे दिसोम को हेज आकान मानतान डॉक्टर टुनी ब्ले और नवा समांगा दुलुब आर पे दुलुब आकान लटू को मानत जोहार और कटी को दुलुर जोहार एम कते अड़ी मिद बार कथाते इनहोय ले तबना उचित तबनई विशेष गायते नवा सोसाइटी बाबत रे थोड़ा लय आबोना नवा दि सांताली लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी दो आबुरेन बाबा ताको जस्ती कायते को चलाव लहायन तबना उनको की नवा को बिनाव लेदा पहिल जखन उनको कोलकाता रे चाकरी को हेजना और हेज कते उनको दो मिटे बनाधाव या जरूरत को बुझाव केदा और उनका लेकाते विशेष कायते अबोरेन मानतान नाथानियल मुर्मू थियोडोर किस्कुरापाज माने टिकेरापाज और नौकागे बारनाबास मुर्मू और आयमा को ताहेकना नौकागे नुको अबोरेन अयुर को दि संताली लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी को बनाव केदा नवा दो 1965 साल रे अप्रैल चांदो रे रजिस्टर होइना और उन खजे नवा सोसाइटी दो अड़ी मोज ते चला कान थाए 66 साल रे 1966 साल रे सार सादली ᱧᱩᱛᱩᱢ मिटे पत्रिका हो छापा सदर एहबिना और लगातार उना हो मोड़े तुरुई सिरमा छापा सदरेना और 1971 साल रे जुलाई मास खोज जुग सृजल मेन कते उना पत्रिका गे ᱧᱩᱛᱩᱢ बदल कते जुग सृजल मेन कते छापा सदर एहबिना और उन खोज गे लगातार जुग सृजल दो छापा एहबिना मेन गानोआ इना को ऑक्टेरिया साहित्य पत्रिका भितर रे जुग सृजल दो मिटे अड़ी दमाना पत्रिका काना और लगातार छापा हजू कान थे मेनखा कोरोना तायम चित को कारण ते थोड़ा बंद हताड़ कना उरुमुटु चला कना आबार ओना जेमो बुन छापा दोहा दाड़िया जुग सृजल अनल सकाम होते तेगी गोटा भारत दिसोम रे साहित्य रे मिटे लड़ावना दो एगु कदा मेन गानो एनते जुग सृजल रिया एतहब खोज नितोआ हबी बुन नेल लेखा जुग सृजल अनल सकाम दो बारसाई गान अनलिये बिनाव रखाब काटवा और बारसाई गान अनलिये ओका को ओलाका ओना को अनल जुदी हर सांटाव कते पुथी रूप रिबुन छापा सदर लेखा मेन गानोआ संताली साहित्य रिया का भंडार बुन मेन के ओना तो अड़ी किसण गिया से अड़ी किसण
अड़ी चेतान धापे तुल रहा आदो जस्ती चीज हो बई नष्ट तबना चला जे नोआ पत्रिका चला कान थाया चलाव आचेबन नित आ तायम दाराम हो जेमन लाहाते चिलका चला कान थाया उनकागे आबोआ नोआ पत्रिका बन छापा सदरते मिमिद परसी दरदिया मिमिद अलोक पड़ा हठे ओना बन सेटेर दाड़िया नोआ को आस बर्षा दोहो काते गे निये खाटो गालमारावते नोडे गे मुचादे काना मा सानाम को सारा आयमा सरहाव गाब्रिएल बाबू सोसाइटी बाबत रे आयमा दामाना कथा कोई लई सुंदरा बना ओका दो अबो को आयमा हर की बाबन बढ़ाया ओना को कथा मेनखान ओका लई के जे संताली साहित्य रे मिटन संभार लिटरेरी सोसाइटी का बेनाव रखा नित हबीज ते जा नेलो कना जे सोसाइटी होते ते 64 गोटेन बोई छापा सदर रखा मेनखान नित हो बोले नुका आयमा पुथी ओने को नुकान सोर्स मिना बोले छापा रिया तो ओना लगी ते आबो को तला खन नोआ को चेल करबोन छापा सदर दड़े ओना हो हुदिस रिया दिन सेटर करबोना आदो तिहिं अबोआ कमी हुराबुन लहा दिया आदो सुमित आम नोडे हजू लगी नेहराम कना चेदा दीदी स्कारे दुड़ुब कना आदो थोड़ा एटा रकम इका और गाब्रिएल हो आम नोआ डायस रे दुड़ुब लगी नेहराम कना संगे साउते दुड़ुब रिया बका रे स्कारे दुड़ुब को हाँ दुड़ुब पानते और बाबुन मेना दुड़ुब पानते आबो नारायण बाबू आम हजू अयो आम हजू नारायण सर सोसाइटी एक्टिव मेंबर एंड गाब्रिएल सर तबे तीन नितो ओका प्रोग्राम बन एहोबा नोआ लगी ते डॉक्टर टोनी ब्ले नहरेया और ओना साथे मिदबार कथा को काको मिना लई भोंगरिया ओना दो ताला ताला रे अबरेन तनल बाबू नहरेया ओना थोड़ा ट्रांसलेट करते लई आलो कोना उनी हो नोडे ताहेन नहराय कना तो नितो दो नहराय कना अबरेन स्पेशल गेस्ट डॉक्टर टोनी ब्ले आया 2 days valuable कल्चरल सोसाइटी सेंट्रल मिटन गालमाराव अखड़ा दोहो कना आपे सनम को सेटेर कंते एडी एडी सरहाव अबो तलारे अबो हर हपन करन मिटन गाती और मिटन चिची दे मानतान प्रोफेसर डॉक्टर टोनी ब्ले अबो तलारे हे सेटेर कना हाने सनी नॉर्वे दिसम खन उनी दो भारत रे और बांग्लादेश रे आया जीवन रिया मिद इसी सेरमा गान अब हर हपन को तलारे माहली को तलारे मुंडे को तलारे आबरन आदिवासी बुहा को तलारे खंद्रन तलाते खेमाव कदा और आया जीवन रिया ओना मिद इसी गान सेरमा जे हर हपन को तलारे ताहेउ कान हानासा दिनाजपुर रे नोआसा रहो संताल परगना से बीरभूम नोआ को जगह रे इना छटा काते चलावेन 2010 गान खन अबो हर हपन को तलारे हुल तायम चेक लेकाते धरम इदी कते लेखान लेखान हर रेको हुरा रेको हटिना हर हपन को और एटा आदिवासी को उनको साउते आडे बसरे ताहेन को मिता में नवा हुरा मारे हुरा सफा हर नुको को चितान रे चलावेन 2010 सेरमा गान खने खंद्रन कदा भारत रे बांग्लादेश रे आसाम रे झारखंड रे और ओना खंद्रन कमी दो सोर दिन मुचित कते है ओना दो तुमल जरवा कते मिटन खंद्रन से तजबीज पुथी लिकाते सदर कना ओना दो नॉर्वे रे दो सदर सेत कना जनवरी चांदो रे और
ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱥᱟᱣᱩᱛᱷ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱥᱮ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ 5 मार्च दाराय कान 5 मार्च हिलक कोलकाता रेया एशियाटिक सोसाइटी रे नुई मानतान डॉक्टर ब्ले ओला ओना पुथी दो सदरवा ओना उढबा और ओना पुथी रिया nyutum do kana a new testament मिटन नावा नियम और तेहिं दो ओना उढौ प्रोग्राम लाहा रेगे अब भग kana अब बोन नेहराते ताहे kana जे एशियाटिक सोसाइटी रे हर हपन को तो कम गेले ताहेना मेनखान आले रेन तायम पीढ़ी रेन को लगी आले लगी हम मिटन प्रोग्राम एमक में जाते आले दोले नथी दोहो दाड़े के ओना पुथी दो ची हुदिस कते आमदम रिसर्च केदा और ओना रिसर्च रे दो तेते टेक कुची को मेना और ओना दो ची लेकाते आले लगी आले आदिवासी को लगी आसो कहते संताल को बड़ो बोयहा को माहले को बड़िया को लगी तो ची लेकाते मोहतना कना नोआ थोड़ा ले आले आदो ओना लगी उनी हेक काते आयमा बन सरहाव दिकना और तिहिन नोडे क्रांति प्रेस बन न्यापाम कना उनिया कथा बन आजमा आदो इन तो नोडे मानतान दिलीप हेम्ब्रम आतांग दाराम कथा लगी मित बार कथा रोड लगी और नुई मानतान डॉक्टर दीदी टोने ब्लेई उनी बाहाते और पंचीते मानताते आतांग दारामाय कमी को पूरा लगी मानतान दिलीप कुमार हेम्ब्रम दादा नोडे मंचरेन होहवाय कना मानतान दिलीप कुमार हेम्ब्रम Tonol Lugo Aima Sarhao, Santali Literary and Cultural Society Saikon Ape Salam Ku Johar, Abubun Badaya Santali Literary Society का मिना तबोन ना तो मिता में 1970 साल से कौन कमी है होगा विशेष करते नवा साहित्य अनल नवा को चितान में अदो नोंकाना कमी को गुना तेगे असो कहते तिहिया नवा का प्रोग्राम मोन होई छे कना नवा तो तिहिया बोतला रे जहां खंदरुंदी है सेटर कान मानतीय प्रोफेसर डॉक्टर टोनी ब्ले उनी बुन आतंग दारामिया आसो कहते नुई दो हड़पन को तलारे का दो तनलोगु लई के और उन समय रे एंते तिरे बेनागड़ी रे पहिल मिशनरी को है इना आ पियो बोर्डिंग केराप साहेब नोंको तको का को कमी ले उन समय रे उना परिस्थिति रे एहब कते नितो हबिते माने एट प्रेजेंट माने हड़ हपन को का स्थिति केना चेक कन हालत रे मेना को नोआ तुलनामूलक मिटन बोय स्टडी कते नोय सामांगा बन कना आदो अब अडी भगना दिन कना तिन दो नुई लेकर मिटन रिसर्च पर्सन अब तला रे सेटल कना आ नोआ का डॉक्यूमेंटेशन अब तला रे लई सदर बना आदो नोआ कते दो तिन नोडे सेटल कना बरन मारंग पेड़ा नुई बन आतंग दारामिया इन बाद दो नोडे दास बन होया और लहासना कमी गुण लहा दिया अदो उना लेकारे उनी बाहा माला एमो लगी तीन हवाई कना औरेन मई बर्नाली अल्फोंस सोरेन उनी बाहा ओ दारा दासिन होया तबे नितो दो हवाई कना बरेन डॉक्टर आगले कम इंस्टीट्यूट दास सताव दे कना मई बर्नाली अल्फोंस नित दो उत्तरिया एम कते उनबुन आतंग दारामिया उना लगे तिन होय कना मई मार्सी हेम्ब्रम नोंडा हिजु में आर उनी आतंग दारामिया निया तायम दो नितो
abawa oka kami hurakan kabun ramka onalika bun laha dia ado nua legit ke lahasana kami bun laha dia Gabriel babu हमसे कौन थोड़ा सोसाइटी बाबत रे मिल बार कथा ले कते अब आरो कमी दुन लहा दिए अड़ी मानोतान तिहिया मो सभारेन मारांग पेड़ा नोरे दिसोम को हेज आकान मानोतान डॉक्टर पुनी ब्ले और नवा समांगा दुलुब आर पे दुलुब आकान लटू को तो मानव जोहार और कटी को तो दुलुर जोहार एम कते अड़ी मिद बार कथाते इनहोय ले तबना उचित तबुनई विशेष गायते नवा सोसाइटी बाबत रे थोड़ा लय आबोना नवा दि सांताली लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी दो आबुरेन बाबा ताको जस्ती कायते को चलाव लहायन ताबोना उनको की नवा को बिनाव लेदा पहिल पहिल जखन उनको कोलकाता रे चाकरी को हेजना और हेज कते उनको दो मिटे बनाधाव या जरूरते को बुझाव केदा और उनका लेकाते विशेष कायते अबोरेन मानोतान नाथानियल मुर्मू थियोडोर किस्कुरापाज माने टिकेरापाज और नौकागे बारनाबास मुर्मू और आयमा को ताहेकना नौकागे नुकु अबोरेन अयुर को दि संताली लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी को बनाव केदा नवा दो 1965 साल रे एप्रिल चांदो रे रजिस्टर होइना और उन खजे नवा सोसाइटी दो अड़ी मोज ते चला कान थाय 66 साल रे 1966 साल रे सार सादली ᱧᱩᱛᱩᱢ मिटे पत्रिका हो छापा सदर एहबिना और लगातार उना हो मोड़े तुरुई सिरमा छापा सदरेना और 1971 साल रे जुलाई मास खोज जुग सृजल मेन कते उना पत्रिका के ᱧᱩᱛᱩᱢ बदल कते जुग सृजल मेन कते छापा सदर एहबिना और उन खोज के लगातार जुग सृजल दो छापा एहबिना मेन गानोआ इना को ऑक्टेरिया साहित्य पत्रिका भितर रे जुग सृजल दो मिटे अड़ी दमाना पत्रिका काना और लगातार छापा हजू कान थे मेनखा कोरोना तायम चीज को कारण ते जो थोड़ा बंद हताड़ा काना उरुमुटु चला काना आबार उना जेमो बुन छापा दोहा दाड़िया जुग सृजल अनल सकाम होते तेगी गोटा भारत दिसोम रे साहित्य रे मिटे लड़ावना दो एगु काना मेन गानो एनते जुग सृजल रिया एतहब खोज नितोआ हबी बुन नेल लेखा जुग सृजल अनल सकाम दो बारसाई गान अनलिये बिनाव रखाब काटवा और बारसाई गान अनलिये ओका को ओलाकात ओना को अनल जुदी हर सांटाव कते पुथी रूप रिबुन छापा सदर लेखाय मेन गानोआ सांताली साहित्य रिया ओका भंडार बुन मेन के ओना दो अड़ी किसण गिया से अड़ी किसण अड़ी चेतान धापे तुल रहा आदो जस्ती चीज हो बई नष्ट होता बुना चला जे नवा पत्रिका चला कान थाया चलाव आछे बुन नी आ तायम दाराम हो जेमन लाहाते चीज का चला कान थाया उनका गे आबोआ नवा पत्रिका बुन छापा सदरते मिमिन परसी दरदिये मिमिन ओलग पड़ा ओठे ओना बुन स्टेर दाड़िया नवा को आज बर्षा दोहो कते गे निये खाटो गालमारावते नोडे गी मुचिरे खाना मा सनाम को सर आयमा सरहाव गाब्रिएल बाबू सोसाइटी बाबत रे आयमा दामाना कथा कोई लई सुंदर आपना ओका दो अबो को आयमा हड़ की बाबन बढ़ाया ओना को कथा मेनखान ओका लई के जे
संताली साहित्य रेया मिटन संभार लिटरेरी सोसाइटी तो बेनाव रकाब करा नित हबीते जा नेलोग कना जे सोसाइटी होतेते 64 गोटेन बोई छापा सदर कना मेनकान नित हो बोले नुका आइमा पुथी ओने को नुकान सोर्स मिना बोले छापा रेया तो ओना लिगिते आबो को तला खन नोआ को चेल करबोन छापा सदर दड़े ओना हो हुदिस रिया दिन सेटर करबोना आदो तिहिं अबोआ कमी होरा बुन लहा दिया आदो सुमित आम नोडे हजू लगी नेहराम कना चेदा दीदी स्कारे दुड़ुब कना आदो थोड़ा एटा रकम इका और गाब्रिएल हो आम नो डायस रे दुड़ुब लगी नेहराम कना संगे साउते दुड़ुब रिया बका उनी दे स्कारे दुड़ुब को हां दुड़ुब पानते और बाबुन मेना दुड़ुब पानते आबो नारायण बाबू आम हजू अयो आम हजू अयो नारायण सर सोसाइटी एक्टिव मेंबर एंड डब्ल्यू सर तबे तीन नितो का प्रोग्राम बोन एहोबा नोआ लगिते डॉक्टर टोनी ब्ले नहरेया और ओना साथे मिदबार कथा को काको मिना लई भोंग रिया ओना दो ताला ताला रे अबरेन तनोल बाबू नहरेया ओना थोड़ा ट्रांसलेट करते लई आलो कोना उनी हो नोडे ताहेन नहराय कना तो नितो तो नहराय कना अबरेन स्पेशल गेस्ट डॉक्टर टोनी ब्ले आया 2 days valuable कोलकाता रे संताली लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी सेंट्रल मीटन गालमरा वाका तो कना मसना बेसेटर कंते एडी सरहाव अबो तला रे अबो बड़कम करन मीटन गाते चिचे मानतान प्रोफेसर डॉक्टर टोनी ब्ले अबो तला रे सेटर कना माने संगी नॉर्वे दिसम कोन उनी दो भारत रे और बांग्लादेश रे आया जीवन रे इसी सेमा गान अब हड़ हपन को तला रे मांगली को तला रे मुंडे को तला रे और आदिवासी बुहा को तला रे खंद्रन तला रे खेमा होता और आया जीवन रे ना इसी गान सेमा जे हड़ हपन को तला रे कहे उनका हनासा दिनेशपुर रे नवासा रकम संताल परगना से बीरभूम नवा जगह रे इने छटा काते चलावे 2010 गान खन अबो हड़हपन को तलारे भूल तायम चेक लेकाते धर्म इदी काते लेकान लेकान हर रेको होरा रेको हटिना हड़हपन को और एटा आदिवासी को उनको सामते आदिवासी रे ताहन को नेता में नवा होरा मारे होरा सफा हर नुकु को चितान रे चलावे 2010 से गान खने खंद्रन का भारत रे बांग्लादेश रे आसाम रे झारखंड रे और ओना खंद्रन कमी तो सुर दिन मुचत करते हैं ओना तो तुमल जरवा करते मिटन खंद्रन से तजबीज उठी लेकाते सदर करना ओना तो नॉर्वे रे तो सदर से करना जनवरी चंद्र और आबो दिसम रे से साउथ एशिया से दक्षिण एशिया रे सदर रे ऑफिशियल माह तो कना दारायकान 5 मार्च दारायकान 5 मार्च हिले कोलकाता रे एशियाटिक सोसाइटी रे दुई मानतान डॉक्टर ब्ले और अपना पुथी दो सदर ओना उढल ओना पुथी रे नितुम दो कना आ न्यू टेस्टामेंट मिटन नावा नियम और तेहिं दो उना उठल प्रोग्राम लहा रे अब भग कना अब बोन नेहरा दे ताहे कना जे एशियाटिक सोसाइटी रे हड़ हपन को तो कम गेले ताहे ना मेनखान आले तायम पीढ़ी रेन को लगी आले लगी हम मिटन प्रोग्राम में
जाते आले तले नथी दोहो दाड़ी के ओना पुथी दो ची हुदिस कते आम दो रिसर्च केदा और ओना रिसर्च रे दो तेते कुछ को मेना और ओना दो ची लेकाते आले लगी आले आदिवासी को लगी आसो कते संताल को बड़ो बयहा को माले को बगड़िए को लगी तो ची कते मोहताना नोआ थोड़ा ले आदो ओना लगी उनी हेक कते आयमा बोन सरहाव देखना और तेहिन नोडे क्रांति प्रेस बन ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ उनिया कथा बन आजमा आदो ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ दिलीप हेम्ब्रम आपान दाराम कथा लगी मिद बार कथा रोड लगी और नुई मानतान डॉक्टर कृति टोने लई उनी बाहाते और पंचीते मानवताते आपान दारामाय कमी को पूरा लगी मानतान दिलीप कुमार हेम्ब्रम दादा नोडे मंचरे होबाय कना मानतान दिलीप कुमार हेम्ब्रम नॉर्मल आइमा सरकार संताली लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी से वहाँ पे सलाम को जोहार अब कौन बढ़ाया संताली लिटरेरी सोसाइटी का बना था ना तो मिता में 1970 साल से कौन कभी विशेष करके ना साहित्य ऑनलाइन नोट चिताना अदो नोंकाना कमी को गुणत दिगे असोकाइते तिहिया नोआ का प्रोग्राम होने चाहिए करना नोआ तो तिहिया बताना जाए मनोरंजन है सेक्रेटरी मानते प्रोफेसर डॉक्टर टोनी ब्ले उनी बुनातन दरामिया असोकाइते नुई दो हड़पन को तलाने का तो हम लोग ले के आज उन समय रे धीरे बिना गड़ी रे पहली मिशनरी को है ना आप यो बड़े केराव साहेब नोंको तक को कमी ले उन समय रे हम परिस्थिति ले यह करते नीतो अभिते माने एट प्रेजेंट माने हर को का स्थिति के चेक कर हालत रे ना हुआ नो तुलना मिटन कोई स्टडी के तक मैं सामने हो अदो अब अडी भगरा दिन करते इन नो लेकर मिटन रिसोर्स पर्सन अब तला रे स्टडी करना और और का डॉक्यूमेंटेशन हो तला रे ले सको अदो नोआ गते दो तीन नोडे सेक्रेटरी नंबर मारन पेड़ा जो अतन दरामिया इन बात तो नोडे ऐसे गुण हो या और लास्ट तक तो गुण लहा दिया अदो उना लेकर नि बहा वाला अनुभूति तीन मकवाई करा और मई बर्नली अल्फोंस सोरेन नि बहा हो या ऑर्डर का हो या तबे तो हवाई कराबन डॉक्टर आगे हम दास तो कहा तबे मैंने समाज में हमारे Itu Uturia yang kita menggunakan dalam ini, nanti kita mulai kena mulai masih dalam, nanti ini kan, akan dalam. Niat tayo itu apa kami merasa kaum perangkat mereka bahan atau dua begitu nasalah terhubung bahagia. Am pernah terkena Gabriel logo हमसे तो थोड़ा सोसाइटी बाबत terbuka jasa lebih gitu, atau kami bahan. अड़ी मानतान तीनिया सरकार मारन पेड़ा और सुन को है अकान सोनतान
Dr. Bleie nova samang duduk arpe duduk latu kudo maut johar ar kati kudo dulur johar em kate adi mid bar kate noi le tabna ucit tabna bises kate nova society babot ge try le abna nova Santal literary and cultural society do aburen baba tako जैसी कायदे को चलाव लहायन tabuna उनकी नवा को बिनाव लेदा पहिल जखन कोलकाता रे चाकरी को हेजना आर हेज कते उनको मिटे ओना धाव रे हिरुते बुझो के आर उनका लेकाते विशेष कायदे अबरे मानवान मखनी मुर्मू थियोडो किस्कुरापाज माने टिकेरापाज आर उनका के barnabas मुर्मू आरो आइमा को ताहे कना उनका के उनको अबरे अयुर को दी संताली लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी को बिनाव केना नोआ दो 1965 साल रे एप्रिल चांदो रे रजिस्टर होइना आर उन खकी नोआ सोसाइटी दो अडी मोज ते चला काम है 66 साल रे 1966 साल रे सादली युतुम मिटे पत्रिका हो छापा सदर एहबिना आर लगातार ना हो मोड़े तुनी सिरमा छापा सदरेना आर 1971 साल रे जुलाई मास में जुग श्री गवर्नमेंट कते ओना पत्रिका के युतुम बदल कते जुग श्री गवर्नमेंट कते छापा सदर एहबिना आर उन भकी लगातार जुग श्री गवर्नमेंट छापा एहबिना मेन गानवा इन को ओतेरिया साहित्य पत्रिका भितरे जुग श्री गवर्नमेंट दो मिटे अड़ी दमना पत्रिका काना आर लगातार छापा हिजु काम मेनखान कोरोना तायम चेक को कारण दे जो बंद हताड़ काना गुरुमुरु चावा काना बारना जेमन छापा दोला दाड़े जुग श्री अनोन सकाम होते तेगी गोटा भारत दिसोम रे साहित्य रे मिटे लाड़ावना दो उनका मेनखान एंते जुग श्री रेया एतहब को नितोआ हबी को नेल लेखा जुग श्री और सकाम दो बार साइगन अनलिए बिनाव रखा का आर बार साइगन अनलिए ओका को ओलका ओना को अनल जुदी हर सांता कते पुथी रूप रे बुन छापा सदर लेखा मेन गानों संताली साहित्य रेया का भंडार को मेन के ओना दो अड़ी इसेल गिया से इसेल अड़ी चिताम खाते पूरा अब जैसे ची खबई नष्टोय ताबना चला जे नोआ पत्रिका चला काम थाया चलाव आसे बुंदी तायम दाराम जमो लाहाते चिका चला काम थाया उनकागे अबवा नोआ पत्रिका को छापा सदरते मिमी पर्सी दो दिए मिमी ओरक बड़ा ओरके ओना बु स्टेट दाड़िया नोआ को आस भरोसा दो कते के निये खटो गालमारावते नोडे गी मुझे kana महा सनाम को पहले सर गाब्रिएल को सोसाइटी बाबू से दामना कथा को ले सुतरापना ओका तो अब को अगावल की बाबू बढ़ाया कथा गंगन का लेके जे संताली साहित्य रे मिटन संभार लिटरेरी सोसाइटी को देना नीत बिते या डेवलप करना के सोसाइटी होते थे 64 होटल बोई छापा सदर गंगन नीट हो बोले उनका आइमा पुथी ओने को उनका सोर्स ना है छापा है तो उना लिखते आपको को तला कोन नो कुछ कर गुण छापा सदर दड़ा हो हदिस रिया की से कर अदो तीन अबवा कभी प्रभु ना दिया तो सुमित अब नोटा के मेहरान करा कि दीदी स्कार में करा तो एटा तो का गाब्रिएल नो आपको डायरेक्ट
Songe saate dulu ya bakal kita sekarang dulu dulu pantai kalau kita dulu pantai karena kita mau ayo apa juga apa itu mau beri lagi Kemudian itu Pak Program pun luar biasa Dr. Bleie ya rumah sahaja kita kakak kamu bina Bongria una tala ya aparen tonol pun ya una try transfer kata dia ini hanya tala ini awal kita तो itu तो yang orang kenal orang special days Dr. Bleie kayak 2 days annual speech oke Okay. जहाँ स्टील फोटो मत हो डॉक्टर करेक्ट आप क्या ना Shall I start? Okay, you can start. Johar again, everybody, and thank you very much for inviting me to your society. It's the first time I'm visiting your society, so that is very timely. Ape sanam ko arham inthau johar noa do aima din tayam pahil dhau huyuk kana je ape Kolkata ren society ren in yapamet pia ana tege edi raske nagya Of course, I would especially like to thank the board's board member and including Dr. Brother Normal for arranging for this. Indo etohop re society re chelawan ko tala re Dr. Tonong Murmu noa oram lagi in budwanau sarhau dekana And I know that there are other volunteers involved, and hopefully later there will be more members and others who will have a chance to share in this experience. और इन बड़ाइकना जे नोआ कमीरे आर्मो एटा वॉलंटियर को सेलेक्ट देना होना और आर्मो सोसाइटी ने एटा रिसीव को पसेट को है सेलेक्ट आ So today's lecture, can you hear me? Yes. Today's lecture, you will see the title of my new book first, that is A New Testament, Scandinavian Missionaries and Santal Chiefs from Company and British Crown Rule to Independence. तेहिया रोड रिया बहुत कथा दो नोडे बुनियन नामदा जे A New Testament, Scandinavian Missionaries and Santal Chiefs from Company and British Crown Rule to Independence. Meta abon miten nawa niyam oka do Scandinavian Missionary ko और Santal koren मंझी परगना को उनको तलारिया ओका जनोड़ाव उना दो कंपनी शासन ओक्ते से कंपनी टाइम दो ब्रिटिश महारानिया शासन ओक्ते खोन एहोब कते भारत फुर्गलो धबी रिया ओक्ते बाबते कना And today I'm gonna tell you over 2 hours more a short story about the following themes. The first one is about my university in the Arctics. The second topic is about the purpose of the book. And thirdly, I will talk about how the book was produced. And fourthly, about how I have narrated, that is the narrative strategy. And fifth, about its content. And then I will also give reading advices and propose some way the
ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱢᱟᱪᱷᱟᱨᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱠᱨᱤᱱ ᱵᱟᱵᱮᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ সুমন্ত বাবু নটা মাছা আসবে বাংলান স্ক্রিনটা আপনারা দেখতে পাবেন না ওখানে থাকলে ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱡᱮᱞᱮᱧ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱨ ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱤᱧ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱵᱷᱟᱨᱛᱤᱭᱚ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱷᱚᱱᱤᱧ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱤᱱ ᱴᱨᱚᱱᱡᱳ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱠᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱤᱥᱥᱚᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱜᱟᱱᱛᱷᱟᱨᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ko ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱚᱨᱦᱚ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱹᱨ ᱠᱮᱭᱟ Next slide. On this slide, you see a historical photo that is from Calcutta Harbour in the 1880s, when already the Santal missionaries was well established in Santal Parganas. नोडे मिटन नक्शा बन नेलदा नोआ दो कोलकाता रेया ओका बंदर सुर रे खिदिरपुर रे मेना ओंडे बादम जहाज कोरेना नक्शा कना नय नोंकान जहाज तेगे यूरोप महादिसम खन स्कैंडिनेवियन मिशनरी को दो कोलकाता बंदर को हेड सेटल लेना ब्रिटिश जिपके So why did I choose this particular photo from the harbour? That has its own significance because these missionaries who came from Scandinavia and gradually from America, they all came via the oceans to Calcutta Harbour, and from there they traveled inland. नोआ मार्शल नक्शा आपे उदू आपे लेगी ई बचाव रेया मिटन मतलब दो कांतिये नोआ बुझो उचुबुन उन जुग रे दो एकेन जालापुरी हर तेगे भारत दिसम रे दो है सेन गानोक कान ताहे कना और जालापुरी हर तेगे कोलकाता रेया दा घाट रे यूरोप खन स्कैंडिनेविया रे मिशनरी को और अमेरिका खन हो आयमा मिशनरी दो भारत रे सेवा कमी लगी को है लेना कोलकाता हुई कते के उनको दो भारत दिसम को सेटल लेना So in this first series of slides, we are going to discuss the following topics then, just to repeat them. नोआ एतहब रेया ओका पटा बुनियल जामदा नोआटा रेदो ची लिकाते नोआ के नि एहब ना आची कना बना धावते उना बाबते मिबा कथानी रोड़ा So in a non-academic language, we will first discuss words and value-based ideas behind this book project, and secondly, how I have gone about with my collaborators in conducting the research. I said production is the same as the production. Thirdly, about the methods I used and the tools. And finally, in this series, I'll talk about how I wrote it in terms of narrative strategies. नित नोआ पटारे कालेका ऑल बिना उनका बो नेला गालमराव एहब रे इन दो पहिल रे लई सदर आबोना नोआ कमी रे व्यवहार कान उका तेते करे उका साडी को व्यवहार कान उका सबात को व्यवहार कान उना करिया मतलब चीज कना और उना भितरी रे उका गुण गुण तेना बुद्धिस मेना उना बुद्धिस को दो चीज कना और इना तायम पे ने ना नोआ कॉन्ट्रॉल कमी रे इन दो उका लेकाते धुरव लेना और धुरव रिया उका उपई को उका मेथड को कान आचित को उपई को व्यवहार करते नोआ चिका लेदा और चित लेकाते इन दो बखान कादा और बखान तायम दो नोआ बाबते चिक को भितरी रे मिना आमा बाबते अंतर दर्शन को चिक कना और नोआ दो चिक को कमी रे व्यवहार दाड़िए और मुझे रे दो नोआ बाबते दो गालमराव और सोल्हा और कुपुली रपड़ उना को ताहे Next, please. नोटा हो चिया को दाड़िए यदि बाबुन निया Welcome to the new brothers. We just started about 10 minutes back, so I'm still in the process of just presenting the key topics, so you have not lost out that much.
ᱱᱤᱛ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱯᱮ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱛᱮᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ 10 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱮ ᱟᱹᱥᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚᱧ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱚᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ? Well, what have I written here? I have written this book is about hidden and known stories, and it's about different imaginations on different parts of the transatlantic world, right? Because your continent and my continent and America are connected into a triangular transatlantic world. Inya noa khondron puthi redoni ol kada nagam ria oka ko katha abu bun badai kan ar oka ko katha do nitho danangi ona ko babotte noa re galmarao menaga ar oka gunan mena tabun oka budis mena tabun ona do mahadisam re chik lika begal kana oka do Europe mahadisam re ko chik lika ko gunan leda अमेरिका महादिसम रन चीज लिखा को गुणन लेदा और एशिया महादिसम रन चीज लिखा को गुणन लेदा और उना को तालाते चीज लिखाते नोआ पेने महादिसम रन हर को तालारे नारजोड़ बनाव लेना मिटन जनोड़ा बनाव लेना उना बाबते नोड़ा तो गुण गालबरा कना. And sometimes when I have worked on this book for about 12, Brother Donald say might be 13, anyway, 13 or 12 years, sometimes I have thought that might be so far our relation have been an impossible love affair. Noa khondron puthi re inya hudis redo gelbar serma lekan kami ukada ar tonol babu ar rol lekate gelpe serma gan ma hui dariya ar noa talate abu talaria oka jonora kan ona tankhi ria I kurumutu kada. What is an impossible love affair? It involves that you elevate your beloved one to something very ideal and you very much are infatuated by the one you love. And okay, can you hear? Yes. So this infatuation sometimes can make one very disappointed. And might be sometimes I have thought that this is the love affair between the Scandinavian missionaries and the Santal, that on both sides you can gradually to elevate each other, somewhat trust each other, and sometimes became really disappointed as well. Noy je pene mahadisam ran hor ko talare noa narjor noa do gun men kia mitten dular ria kisa ka do bang gano lekana kan mitten impossible love affair men tege bun hudis ke chik noa do chik lekate hoina ar mit etagi babokte unkua oka ko hudis tahe kana ona bun hudis chik lekate tina dhabit ko jodao lena mit etagi saute আর যে ওনাদের শরীর মিটেন দুলার কাহিনী কান গিয়া সে মিটেন বুলাও কাহিনী কানা মিট এটা আনতে মিটেন দুলার কানা সে মিটেন ইনফ্যাচুয়েশন কানা ওনা বলতে. So perhaps my hope for this book I have written a New Testament is that might be instead of having an impossible love affair, might be we can begin to build a trusting relationship which is not so overblown but still respectful and more realistic. Noa khondron puthi ria oka boho katha kan ona do mitten nawa niyam bang men kate noa do an impossible love affair se mitten bang gano dular kahani ona ho hoi dari ko ar noa tala te ko niela mit itagi lagi chikate dene bana pata kon patiyau tahen আর মানব তাহেন উনকা লেখাতে যে নোয়া নারজোড় বেনাও দাড়ি কোয়া তিনে গুণ আশকান সে তিনে গুণ আসকান উন ধবি বাং হয়ে রহ ওকা বাস্তব রে ওকা বই দাঁড়িয়া উন ধবি যে মি এটা কি লাগি মানব
ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱟᱣ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱮᱱᱟ. And quite much of what I write about is actually a story about how some Santal missionaries, mainly Kerala and Bleie, together with the gurus, actually transformed sacred utterings in the whole society and made it into things to be collected and sent to Scandinavia, and similarly they collected sacred utterings and made them into manuscript to be sent to Scandinavia. नोडल संताल मिशनरी को तलारे मिशनरी साहेब को भितरी रे किरात साहेब से बोर्डिंग साहेब और संताल को रे मारे हपराम को से गुरु को उनको मिट एटागी साउते बड़ो बड़ो काते संताल को आका सनद बाखेड़ कान उना दो चिकाते ती ऑल गुरहे रे मैन्युस्क्रिप्ट रे को ऑल उचड़ दाड़े किदा और उना दो रखी जोगाव लगी उना दो स्कैंडिनेविया ते को कोल किदा. When I formulate it like this, it's also because I want to remind ourselves that these early meetings between your gurus and the early pioneers was a very unique moment in the whole Hoppen history. तीन रे नुको पहिल को नेपेलेना बेटा मैं संताल को तलारन मिशनरी साहेब को और संताल को रन मारे गुरु को नुआ देने बनार पहटा कोन का न्यापाम होइना उना न्यापाम रिया चिक लिकान कैरेक्टर तहेकना से उना न्यापाम तलाते चिक हुई चुई को मेन किदा उना दिगदुबुन नेला. So we can imagine that this process of transmuting, reducing your oral legacy, much of it, into things and manuscripts might be 50 years. But think about, you lived as a people, whether you lived, let's say, a decline by society or whatever, for many thousands of years with your oral tradition. So if we think in that way, we understand how peculiar and dramatic and special this moment for the 50 years was. नॉय पहिल कोई पायोनियर मिशनरी को ताहेकान और संताल को रन मारे गुरु को ताहेकान नुको जे नारजोड़ कते मिट इटाबी सांको न्यापामेन और न्यापाम कते नॉय उका सनद बखान को और उजड़ के नुआ कथा दो पेगेल सिरमा गान रिया कथा का नामेन खान एकेन 50 सिरमा रिया नागाम में तो आलोगुन हुदिस उका सैक्रेड utterings bun menda se sonot bakhen bun menda ona je or uchuren ona rege tarhaw minaa mitten manwa jat likate santal se hor hopon ko हजार हजार सेरमा लहा को उका लेकर को ताहे है जेकाना और उनारिया मुचा मुचाते उका कथा उचुड़ है काना पीढ़ी कोन पीढ़ी उनारिया दिसे दो कथा को हम उमारे बिना एकेन मोणेगेल सेरमा रिया नागाम दो बान काना उनका लेका बन बुदिस्मा. And the photos I have chosen says something about different imaginations I have tried to understand and put into writing in the book. और उका को मार्शल नक्शा को नोडे उदु अबुन लगी इन बचा उकादा ओना को तलाते नोआ उदु अबुन इन मेन कदा जे अबुआ गुणन को मिट एटागी खंचित लेकाते बेगार करना अबुआ हुदिस जंकु अकोयटा उका लेका ताहे कना और ओना होते ते चिक को हुदिस सदर चुइदा ओना उदु अबुन लगी इन दो नोआ को मार्शल नक्शा दो नोडे बचा उकादा. So if you see the picture to the very right there, that is a picture of myself in Copenhagen when I stand in front of a picture of Santal woman. That is an art piece by the Bengali artist Roy, a famous Bengali artist who has done lots of paintings of the Santal. So this is, you could say, that picture from Bengal has traveled to Scandinavia and Denmark, where
ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱨᱣᱮ ᱨᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱤᱧ ᱯᱮ ᱧᱮᱞᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱥᱮᱱ ᱨᱮ ᱵᱷᱤᱛ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ पेंटिंग से चित्र मिना उना चित्र दो मिटन नामजदीय बांगाली चित्रकार उनिया परिस्ते लेदा राय उनी पासे जामिनी राय होगा इन्या इनी ले लिपिदा आदो बोलपुर शांति निकेतन रमिनी राय मेंते कोई फेमस चित्रकार ताहेका उनी हर तिरले को चितान रे चिकाते नेल ले को हर माइजी को हर हपन को माइजी को आ उनको आ ताहेन तपाहेन उनारिया मिटन नक्शा उका दो बांग्ला रे से नीत उका पश्चिम बांग्ला पुन मेन उनरो दो दिसम बांग हटिया करता है कना बांग्ला दिसम रेन हर हपन रेन तिरले को उका लेका को ताहे कना उना बाबते उनी चित्रकार उका नक्शा बनाव का उना दो भारत दिसम पर यूरोप रे चिकलिकाते सेटर ले And in the middle, you see on the top there kind of quite common modern representation from the Santal Hul. और इन तायों लेगा नखा खन ताला सेंगुन हेड लेन खान थोड़ा बन नियला चितन नखारे उका मासाल नक्शा नेलो खान नोडे हुल दिवस में ते ऑल मेना नोआदा नेबेतार ऑक्टेरिया हुदिस कना हुल महा बाबते नेबेतार ऑक्टेरियन हॉर हपन को उका लेका अकुआ मुठर से उर्गन को सपड़ावदा नेल जोंग लेकिन ओनारिया मिटेन नमूना कना. And in this history work, I put quite a lot of emphasis on the Hul as a historic moment of the Horhopon and the reasons why it was so important when the first missionaries traveled to Benagaria and eventually was able to claim land in the jungle. But in my story, if the Hul had not happened about 12 years before they arrived, I doubt that the missionaries would be allowed to settle in Benagaria. नोए जे संताल को होते थे उका हुल हुईले नोआदो नगामरिया इनके खास महामेंते इंदोय उदु अबुन कना संताल को हुल ले उना हुल रिया गेलबार सिरमागान तायों पगिल मिशनरी को संताल परगाना रे को संताल को तलारे जंगल तलारे से बीर तलारे को हेक सेटर लेना बेनागडिये रे और हुल जुदी बान हुईले खान 1895 रे ताहले इया मन रे दिग्ध मिना जे नुको पहिल मिशनरी दो संताल को तलारे बेनागडिये रे बसकोतो रिया परमिशन से छड़ को एम के कुआ से बांचो हुल हुईले तेगे ओंडे दो मिशनरी को बोलो और को आड़ा कुआ ओनाते हुल दो नागाम रे दी मोहकना दिन कना हरहपन कुआ. And then if you see the photo in the middle under, these are craftsmen, Santal craftsmen, who has been invited to learn a new generation how to make this Santal string instrument, which you see to the left there. Latar re okoi pene mahasal ko duru bakan noa marsal naksa re bon niela नुकु दो संताल करिगोल को कना को ओकोय दो आपको अति कमी होते थे नोडे एकदम जोजन नखा सेंबुन नियला मिटन भद्र बनाम और उनका ना के उका सुतन ते तेज बनाम उका होते थे सिरेन से दुरन हुई दाड़िया उना बिनाव रिया उका हुनर उना दो तायों पीढ़ी एम चाला को लेकिन मिटन कमीसाल को हेज जरवा लेना नुको दो आकुआ हुनर तायों पीढ़ी एम चाला को लेकिन नुआ कमीसाल को हेज जरवा लेना उन वक्त रे उनको आ जरवा रिया मार्शल नक्शा कना और उका को बनाम को बेनामे का है कन उना रिया मिटन नमूना दो जोजम नखा सेंबे बुन जेरे नामदा. And I will later share with you a bit about that. I helped to facilitate so that the Santal Museum of Santal Culture in Birbo has collaborated with the Museum of Culture History in Oslo, and in this collaboration, this renewal of the Banyan tradition has been one of the collaborative elements together with the Indian Museum here in Calcutta.
Ar inya galmarau ria tayong pahta re in noa katha hon leya noi banam benau ria durang ria uka jugdhan hor hopon ko talare mena ona rakhi jogao lagi बोलपुर शांति निकेतन सोर रे उका संताल कुआ उका म्यूजियम मेना ओना दो नॉर्वे रिया भोग नगरह ऑस्लो रे मेना अरिचली दिया म्यूजियम सामते चेक लेकाते बड़ो कना नवा देखी जोगाओ आर पुरचा पसनाव लगी संताल कुआ बनाम बाबत दिया नवा जुगधन आर ओना कमीरे तो कोलकाता रे मेना भारतीय जादूघर una museum ho ona kamire bodo re select kana ona katha kun anjoma. And then you see an old fabric in the middle. And why have I chosen that photography? Some of you here might be teachers, or you might write literature, or you suddenly study literature, and you will see later that I will share with you my narrative strategies and use of symbols in my story in this book. And one of my sources of symbols to explain things for the reader, I have taken the inspiration from this kind of tapestry. I think some of you are quite familiar with your style of poetry making. What I did was that I am from a community where this kind of tapestry has been woven for many generations, and I learned it when I was young. Then I first came to Dinaspur in the 1980s as a young scholar, and I learned in the villages about the weaving techniques in the villages. And that was a very interesting thing for me to discuss with them, since I had a background from weaving myself. And also later I visited in the community which made cottage production of panchipara, for example. So that's why I found this kind of symbolism can be useful in our book. So both we in the north and you here can understand some of what I'm trying to tell you. Ar no banam ria naksa arunku करिगल गुरु को नक्शा तला मला रे मिटे नक्शा रे को नेला हर हपन को हते के तीन लुगड़ी रिया मिटे नमूना रिया मार्शल नक्शा नोडे बन नेलदा ओका दो हर हपन को दो अडी दिन खन को तीन अगुए कान ताहे कना आकुते आर ओना रे उनको हुनर चिलेका बन नेलदा उनका के उनको रे है इदी कान हुनर तीन दिन खन ताहे ओकान आर सर्दिन रो ताहे कना जेलका 1980 दशक रे इन दो उत्तर बंगाल रिया दिनाजपुर रे ताहे कना हरपन को तला रे आर नोआ तीन लुगड़ी लिखाना के आइमा लिखान नाना हुनर लुगड़ी से किचरी को तीन कान ताहे कना नोआ छड़ा कता हम पंची आर पढ़ान आकुति को तीन कान ताहे कना आर को लाड़ चढ़े कान ताहे कना आर उना तलाते उनको ती कमी रिया ओका नक्शा का डिजाइन उना होटल रखा बकान ओना रिया नोआ रे ची मतलब बिना आइया गालमराव तलाते उना उदु अबुन लगी होन वाटा मार्शल नक्शा बचाओ कदा. Next please. An introduction about my university, which is called University of Tromsø, Norway's Arctic University. That is the official name. मिडन उपरम कथा लेका इन उकाटा धरतीय बिरदगाड़ खनि हजुक कान ओना रिया न्यूतुम ट्रॉम्सो रिया धरतीय बिरदगाड़ ओका दो नॉर्वे रिया आर्कटिक विश्वविद्यालय हो मेताक कान आर ओना दो नॉर्वे दिसम रिया उत्तरी नखारे मेना सपमी is it to pronounce in Sapmi नखारे मेना ट्रॉम्सो रिया धरतीय विद्यागार दो आर इन दो ओंडे की पढ़ावे काम है कना. And very interestingly, Sapmi is the transnational name for the territory of the indigenous Sami people who live up there. नोडे उत्तरी नॉर्वे रिया ओका टोठा रिया नितुम सपमी मेंते बुन नेलदा ओना दो मेनखान जजतीय नुतुम कना ओना टोठारे कोई समी मेंते कोई आदिवासी हॉर को मिना को उनको दो नवा सपमी नुतुम तेगे जजत को तलारे को
उपरुम उचुक कना. And on this picture, you see our university campus, which has an architecture inspired by indigenous, very ancient architecture from the Stone Age. So the circles you see in the middle actually are inspired by Stone Age, stone engravings, which are 12,000 years old. और नोंडे उका ट्रॉम्सो धरतीय विदुगार रिया उका दोलान बुन नेलदा उना दोलान बनाव रिया नक्शा उना रिया उका बाखेर रचा बुन नेलदा उका तलारे मिटन गुलंड जगह बुन नेले मिटन वृत्तो से सर्कल बुन नेले नोआ को तो उनको सामी आदिवासी कुआ उड़ाक को दुअर को दोलान बनाव रिया उका धारा ताहे का उना मुठन पंजा कते बनाव कना उका दो उनको दो हाने मारे धीरी जुग खन नेतार हबी अकुआ उड़ाक दुअर दोलान बनाव को पंजा कदा उना नक्शा के पंजा कते नोआ ट्रॉम्सो विश्वविद्यालय रिया दोलान और बाखेर दो बनाव कना. Next, I already said that Sapmi is the name of a transnational territory. I will soon show you the map of it. And secondly, our university, together with other Arctic university, we call ourselves Arctic Circle University, like an umbrella university association. और नोडे थोड़ा घड़ी टाइम भी ले अबुना हमारे नक्शा मान नक्शा हम जुदो अबुना जे सापमी मेंटे उका तुलहाट बिना उना दो एकन मीटन दिसम चे मीटन जित्रिया दिसम रे दो बांग सीमा उनका मेनखान उना दो जजत को तलारे मीटन जजतियरी तुलहाट मेंटे मानो तो चो कना और उना तुलहाट रिया मीटन धरतीय विद्यागार दो कना ट्रॉम्सो रिया उका विश्वविद्यालय उना दो उका हिम कुलन बुन मेना उका मेरु वृत्तो इलाका कान उना इलाका रिया धरतीय विश्वविद्यालय मेनते नोआ दो न्यूम न्यामो कना और उना तुलहाट रिया मान नक्शा इन गालमराव ते उतो अबुना. I already told you that we are also an indigenous university, so everything in our university will be written in 3 languages in the campus, in Sami and Norwegian and in English. और नोआ कथा ले पे कना नोआ ट्रॉम्सो धरतीय विद्यागार दो मिटन आदिवासी विद्यागार खान तबुना और उना तेगे नोआ विद्यागार रे तीन कमी को हुयो तीन खंडरंत को हुयो उना दो मेनखान पेटेल गोटेन परसीते मिटते ओलोआ मिटन दो सामी आदिवासी परसीते दोसार दो नॉर्वे दिसम रिया नॉर्वेजियन परसीते और तेसार दो साहेब परसी से इंग्रजी परसीते मिटते पे परसीते ओलोआ. And I already told you that the campus architecture is inspired by Sami cosmology and vernacular architecture. And then in terms of our education, we have studies in Sami literature, in indigenous law, etc., indigenous and peace studies. These are English educations in my university. और इन लहरगिन ले काकुन लेका सामी कुआ विश्वविद्यालय कांते उनारिया उका दुलान कोरेना गढ़ा मुठन उना दो सामी धाराते कान उना हो काना और उना तालाते सामी कुआ उका धरती दर्शन कान उका कॉस्मोलॉजी कान उनकुआ उका बुद्धिस्ट पूरा है इदी कान उना दो उना गढ़ा मुठन तालाते रोंडेना ओलोक पढ़ाओ तालाते होटल रखा पकाना. And we have a quite famous university museum which has a permanent exhibition of Sami history and prehistory. There are also archival collections there of Sami, recording of Sami oral tradition, musical tradition, similarly of ethnic minorities who has been recognized in our constitution, and of course also ethnic Norwegian material and immaterial heritage is in this museum. और आलेया उना धरतीय विद्यागार रे दो
सामी आदिवासी को कोएन कोआ नॉर्वेजियन ओकोय मारे हर को ताहेकान उनको मारे नागाम बाबते ओंडे मिटन रखी जुगाव गाड़ मेना तलिया से यूनिवर्सिटी म्यूजियम मेना तलिया और ओना यूनिवर्सिटी म्यूजियम रे दो नुकु पेने जुत्रेन हर को पेने तोरखान हर को आइमा जिनिस के रखी जुगाव मेना ओका तो नागाम अक्तेरिया होकान और नागाम मांग रिया अक्तेरिया होकान उना को लिया नमूना को ओंडे रखी जुगाव मेना. Next. Here you see the transterritorial map of Sápmi, and you will see here that Sápmi covers more than 50% of Norway. It covers might be 30% of Sweden and 20% of Finland and also some of the Russian territory. और नोडेबुन नेला सपमी मेंते ओका जजतियरी तुलहाट मिना उनारिया हटिंग के चाकू एकदम मुझे रेबुन नेल किया नॉर्वे दिसम रिया मोनागेल पोसाई लिखा जगह दो सपमी रिया कना डेनमार्क रिया दो बारगेल पोसाई लिखा जगह दो सपमी रिया कना और उना साउथे थोड़ा थोड़ा हिस दो डेनमार्क और रशियन फेडरेशन नुआ को दिसम रहो पड़ाव कना नुआ मान नक्शा रे उना बुन नेल दाड़िया. And the color markings show all the different types of Sami language, northern and southern, like you have also different type of Santali, and there are several types of Sami language marked on this map. और समी कोआ का पर्सी कान उना पर्सी रिया बोली को रिया किचा बेगार ते दो नोआ रोम ते बेगार हिस गे उका को सामी बोली रोड़ो गुआ जेलका आपे और हपन कुआ हो संताली रिया आइमा हटिंग मेना और आपे दो इना पर्सी के जुदा बोली ते पे रोड़ा सामी को यहाँ को हो उनका भी जुदा सामी पर्सी रिया बोली ते को रोड़ा उना रिया हटिंग बेगार को दो नोआ रोम ते उदु उकाना. Next. This is an interesting map for us. Now I have jumped into a map which describes our transatlantic world. That means the world which binds us together as a movement, including the Santal Scandinavian missionaries and the Santal or Hopon of your areas. नित्य इंदो हनाटा मान नक्शा कौन आर्बिट्रेन मान नक्शा रे इंदो उचुड़ चुये पुना उकादो अटलांटिक जलाकार देने बनाल सारे कोई मिशनरी को ताहेकान अमेरिका और स्कैंडिनेवियन उनको साथे भारत दिसम रे हर हपन को उनको नारजोड़ चिकलिकाते बिनावना उनारिया डहार रिया लीक कोई उदु उकादा. This is a very important term, transatlantic, and when you read the book you will realize how important it is to understand that it was a movement across this enormous ocean back and forth for several generations. नोआ कथा ट्रांसअटलांटिक से अटलांटिक ऑन पारोम नोआ दो अडी मोहतना से निजामा साडे कना अबुआ नोआ गालमराव लगी और उना दो उदु अपुन कना उका लिखाते अटलांटिक जलाका हानासा नोआसा देने बनार सारन हर को साउते नोआ भारत दिसम रेन हर अपन कुआ जोनोड़ा बिनाव लेना और उना रिया हर डहार कुचित कना उनाते नोआटा कथा दो बोल थोड़ा बन मोने अपना अड़ी खास कथा करना ट्रांसअटलांटिक दो. And I don't know what you think yourself, if your parents and uncle and aunts and so on, the pastors over here have taught like this about this enormous global set of interconnections we have nurtured for so long. You might think, maybe they didn't realize it fully, but at least I have found that there is one expression which has something to do with that, which I found in oral tradition, namely that many have been aware that your Stone Age tools, your implements, jewelry, drugs and all of that went, as they say, across the 7 seas to Scandinavia. इन बन बड़ाई करना अपेरन हाना बुढ़ी को
गोड़म्बा गोड़म बुढ़ी को गो बाबा को से आपेर नायके को चीज लिखा को लई का पेया आपे अटका रखा था से बन मेनखान नोआ मान नक्साते इन नोआ लई अपे कना चीज लिखाते आपे धीरी जुग खन है इदी कान अपेया सपाप को अपेया बजना को अपेया इटा हथियार को चीज लिखाते हर जरवा करते जलापुरी पारम करते स्कैंडिनेविया रे चलाओ करते रखी जोगाओ काना उनारे हर डहार को और उना तला रे संगीन ते उना अटका उचू पे लगी नोई मार्शल नक्सान बुदू अते कना और इन दो अटका रखा अकोय अकोय को दो पे बुझलु तेबा अकाट गया मेनखान तीना झल तलाते नोआ कमी होई लेना उना बुझलु दो नोआ नक्शा तलाते बुन नेलदा Yes. And then next please. Here I present myself a bit, first the university and then our worlds, and now a bit my journey. The first period of my journey was quite long. It started in 1982 and I would say I would count up to about 2005. At that stage I published the book you see to the left, to the right there, called Tribal Peoples, Nationalist and the Human Rights Challenge, the Adivasis of Bangladesh. So that came out, as I said, in 2005. उना घड़ी दो इन्या जीवन रिया ओकाटा पाटा दो ट्रॉन्सो विश्वविद्यालय रे पढ़ाओ को बाबत ते ताहेकान नित दो इन्या जीवन रिया आर्मिक पाटा बाबत थोड़ा निलया बोल रगे ओका दो दिनाजपुर रे इन हड़पन को ताला रे ताहेकान नोआ नक्शा रे इन पे नेल जामेन कना ओका दो 1982 साल खन 2005 साल रे इन्या मिटेन आर्मिटेन खंदरम पुथी ओका रिया न्यूतुम दो नडबन नेल द ट्राइबल पीपल्स nationalism and the human rights challenge the Adivasis of Bangladesh no the Bangladesh khon sodor kan inya khondron puthi kana inya jiun rea onata pata rea marshal naksha ko talate leya bol kana. But if you look to the picture to the left there, written Malungsha, May, June 83, there you see me in the village. The first year I had lived in that Kuruk village. So I lived there in that para and I came back several times. So between 83 and 87 I lived in that area for 3 years and among the indigenous people, and in the area were also Rajbanshis and some Bengalis, and the Uran mostly dominated in those villages, but the Santals came also in there because they had very close friendship, ritual friendship, as you know, with the Urals and so on. So I was also introduced to them. नोंडे लेना खा उतर रिया मार्शल नक्शा रे बन नेलेया ई उन्हें मिटेन दो इन कना ओका दो 1983 साल रिया मई जून चांदो ओक्ते इन उन्हें ताहेकान दिनाजपुर रिया मालंचा आतु रे और हर हपन को तला रे कालकान ताहेकाना तायम ते आरहो 1987 गान धबी ओंडे सेंकुर कते ताहे ओकना पे सेरमा ओना आतु रे दन ताहे ओकना और हर हपन को छटा कते हो ओंडे दो उरौ बोयहा को बांगाली बोयहा को राजवंशी बोयहा को उनको सामते बन गाते लेना और अडी मौज गिरी पिरी तले ताहेकाना ओना रिया मिटेन मार्शल नक्शा ओना मालंचो रे आदिवासी पाड़ा रे इन पे जलन करना. And there in the middle you see me together with a very close friend. His name is Tika, and he, unfortunately, he's no longer with us, but Paul Tika introduced me to his community and was very important for me the first year and has been a close friend until he passed away. और उना मार्शल नक्शा रे इन साउते इनुते दुरु पकान कोइटा पे नेलेकान इरन अडी सतासम गाती कुई गांती है उनी दो छिते नुतुमया और बेभक्ते निदो अबु तला रे दो बनुया तमाम कनाय मेनखान नुई दो उनी कनाय छिते गे इन दो हड़पन को साउते इया नारजोड़ बनाव रे बड़ो दिन ताहे कना उनको कथा को बुझो उनको अरिचली को नोआ बाबते आइमाय बड़ो दिन ताहे कना और अडी सोर गाती कुई ताहे कान तिया मेनखान बेभक्ते निदो अबु तला रे बनुया उनी दो बोंगा तलाव कना. Next.
And here I mention to you some of the important discoveries summing up then between 82 and 2005, which motivated me later to write this huge work. The first discovery was that I found in my area that the missions were very influential in Johannesburg, both the Catholic missions and the Protestant mission. So I was not sort of very positive to them, I must say, because I was a trained anthropologist. We are against conversion, but I found them to be very influential, and that's why I got interested. नोडे दो इन आपे को तलारे ताहें मारांग उतर रे ची कुछ तुरते न्याम लेदा ओना दो खाटो तें लेगा उका दो 1982 खन 2005 सेरमा को तलारे सिंद्रा न्याम ले और अपन को तलारे ताहें ओक्ते आसोकाइते मिशन रिया और संग उनको समाज रे ची लेका पढ़ाओ लेना उनारिया इलाम ची ताहें कना उनको भूमिका ची ताहें कना और बना मिशन गे मेता अपने कैथोलिक को मिशन हो और प्रोटेस्टेंट को मिशन हो और अपन को समाज तला रे ची लेका भूमिका ताहें कना और उनारिया और संग उका इलामे दो बोले उना दो इन दो पंजा न्याम लेदा इया ताहें रिया एकदम मरांग उतर दिन करे. In my second year in that area, I found myself accused by the Muslim fundamentalist cadres, accused of being a missionary, and they wanted to kill me. So I had for some time to not appear in the open, and I had my own bodyguard in the village. उन वक्ते इन आपे को तलारे ताहें रिया दोसार से मारेगे इन सामने को आमने सामने इना मुस्लिम उग्रपंथी को अकोयदा इंदो मिशन क्रिश्चियन मिशनरी मेंते को दोष किदिया और इन गजाई को मेने लेदा और इन गजाई को पंजा बड़ाए कांता है कांते इन दो समान सदर उडो को दो बंद लेंती है और इन सामने बॉडीगार्ड अंतर हो दारान हुए कांती ताहें कना. So I kept away from the missions in order not to be suspected again for a long time. But it was my villagers who told me, they called me Pandri, that means the white one. They said to me, come, you have to come with me because we will visit our children in the mission school. My mom is sick, we can only go to the doctors in the mission, you should come with me. So in that way, I reluctantly followed them to the missions. और उनको उग्रवादी को ती कौन बंचा लेकिन इन दो मिशन सामते इन्या जोड़ाव जो पूरा वो इरादा करता है कना कड़ी दो मिशन संग दो बुन चला करता है कना मैं खान और अपन कोरन आतो हर को भी इन दो आतो सामते को दोह की दिन्या और इन दो पानित्री को मितों करता है कना मिता में ओकोई दो ये पूंड की कहते हैं पूंड मछा पसे उनका दिशन रिया सदी कना और इंदो अकुरन जुअन को अकुरन गिद्र को साउते एडी मौत को साल में साल उछुओ दिया और उनका लेकर उनको साउते की कहेना. So that's how I became even more understood better that the mission play an enormous influential role in the indigenous communities and the low caste communities in the area. And also I learned that especially in the church milieux, they had clear idea that in Norway there are a lot of valuable things from our heritage. They called it like treasures. They said it was like gold, it was so valuable. But that time I didn't fully realize that. I hadn't been in the collection, so I simply wrote down what they told me in Johannesburg and investigated it later. और उनका लेकाते उनको तलारे ताहें ओक्ते इन दो तुरते जाम किदा जे उनको समाज रे मिशन रिया और संग तीन महत्वना कना उना दो चे माने दो होएदा और मिशन रे तीन रे हेलमेल करे उनको आदिवासी को तो हजू कांता है कना से उनको लतार गतार रे इटा जतरन को और उनको अकुआ उका नागाम अरिचली को रोड़े कांता है कना इन दो उनारिया निजम ते दो बन बुझव लेदा मेन खान दो ऑल दो लेदा
আর ওনা অল দহো কা ওকা বিবরণ কান ওনা দো তায়ম দরা মিয়া খন্দরন কমি রে ইন দই লাড় চাড় কাদা এডি তায়ম তে মেনখান উনর দো এডি দো বই বুঝিও লেদা অল দহো লেদা Next, please. Here we are in 2005, and that year I published that book, which was made in collaboration with the Santal youths from the villages, whom I trained together with Santal students from Rajshahi University, and we also collaborated those years with 12 civil society organizations, including the civil society organization of BNLC. আর নোয়াটা মার্শাল নকশা রে বন নেলা ইয়া ওনাটা পুথি ওকা দো 2005 সেরমা রে সদর লেনা আর ওনা খন্দরন কমি দো কমি তালাতে খন্দরন হইলেনা আর ওনারে দো সিলেক্ট কো তাহে কানা সান্তাল জুवन को আর গেলবার গোটেন গান সুশীল সমাজ সংগঠন মেতা মে এনজিও को আর ওনা তালাতে নোয়া কমি দো উনরে সদর সমান কিছু লেনা So the picture is taken from the launch in Dhaka, where we invited to Dhaka representatives from all the areas of Bleie Adivasis in Bangladesh, including all who had collaborated, chiefs, local government representatives, our diplomats, all were present in that book launch in Dhaka. ओना पुथी उधे वखड़ा रिया नो नक्शा को नेले नोटा रे सेलेदो लगी तो बांग्लादेश रिया तीन तापोल अत्रेन आदिवासी को मिना को टोठा टोठा रेन सनाम आदिवासी को कौन उजी ओंडे को नेता अचुलेना आर को सेलेक्ट लेना आर सेलेक्ट करते ढाका रे नो पुथी दो उधे लेना I won't tell you more of that. Now I'm gonna, next please, tell you 3 eye-opening moments years later which directly led me to decide to write and research this book. So in few words I will tell you those moments. আর নিদন লইয়াবনা ইনিয়া জীবন রেয়া অনকান ঘড়ি तीन रे दो इया मेट उतेन लेका इकेउ के उनकान पेपे गोटेन ओक्ते आर ओना तालाते ची कोई अटकार थिए किया ओना पे गोटेन अनाटकार इन दो नोडन लइयाबुना And those eye-opening moments happened between 2009 and 2010, when I had begun to research the book. But that time I thought I would write a small pocket book for my own countrymen to remind them about the relationship with the Santals, which they had forgotten. So that was my original purpose, but that changed. আর না পে পে গোটেন মেট ছাড়া ঘটনা को ना दो इन साथे होइले ना 2009 खन 2014 सेरमा को तलारे আর ওনা মেট ছাড়া ঘটনা को होते থেকে নোয়া পুথি অল রিয়া গুণন ইন তালারে হে এদিয়া মেনখান মানাং রে দই হুদিস লেদা ইন তো মিটেন খাটো মাছা পুথি ওলা ওকা দো সান্তাল কো সামতে ইয়া ওকা নারজোড় আর ওকা চীন পারছো সে বাধাই উনকুয়া इनी नाम ले ओना बाबते नोआटा मारान कमिया ओना तो मारान रे तो बई हुदिस करता है कन So this first eye-opening moment in 2013 happened actually just 15 minutes from here in Southern Street in my hotel room, when a Santal elder, respected elder from Dunga, he was also member of the congregation there. He came to see me, and he was very concerned with the bitter conflict within the church. And in order to tell me about the problems, he took up from his bag a tiny booklet. আর নোমে মাসালেন ঘটনা করে पहिल उतरा दो 2013 सेरमा रे नोडे कोलकाता रिया सदर स्ट्रीट रे इया होटल सोरेगे होइलेना तीन रे दुमके खन मिटेन लुथरन मिशन रे मिटेन हापड़ाम हर उनी हेज लेना इन यापामी और उनी दो आया मोटरा खन
ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱮᱲ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱧ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ. And I could see the booklet, I recognized it, I knew the booklet was called the, you know it too, Dr. Hodner's book. Oka ona mare ora puthi una joton te doho ka into samne samne te nyel rum kida ar pase ape hobe ona puthi babot do pe badaya katik puthi kana ar ona do Dr. Hodne ola puthi kana. And the way he treated his book, I was very puzzled because he treated this booklet, it was very old, from 67, like gold. Haharabi nakar kida uni maren hapram okoy ᱤᱧ ᱧᱟᱯᱟᱢᱤᱧ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱳᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱫᱷᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱡᱽ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱛᱮ ᱜᱩᱲᱦᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 1967 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱧ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱭᱮᱱᱟ. So when I came home to Norway and to my own library, I took out of the shelf Dr. Hodner's book, very small and very few pages, like 130 pages about, and then I took out of my shelf the huge series, the Santal Mission History series in Norwegian, that is 1600 pages. I took out the biographies of Dr. Hodner and also the biography of Yasin about Papa, and I took out several other histories written by Santal missionaries in Norwegian and Danish. So that heap of books was like this. Tinre Bharat Hiri Khon inya orak te iñiñ ruwᱟᱹᱲᱮᱱᱟ ar inya puthigar khon Dr. Hodne ona adi etan puthi ona otur kida ar ona pante re ale disam re nyamok kan santal ko talare Scandinavian missionary ko ka all bel ko mina ona do 2000 gan sakam huwa nunag gan chakina ar ona talare Dr. Hodne ra jiyon charit ho mina ar unko missionary ko kami adi phailaw te all mina ado ona kin pante re doho kate tula jukha keda. When I saw this very huge difference, I became shocked and I started to think, what are the consequences of this for the Santals and for us? And I realized that you people have been deprived of most of the literature which is about your own past with the missionaries. And for me to realize that was a very morally upsetting thing. I actually realized, can I do something about it? Tinre Dr. Hodne ola ona etan puthi saute ona chake okan dariya puthi ko tula jukha keda adi sopajna ya mon ontor sopajna ari atkar tiyo kida je hor hopon ko do akwa ke mare nagam babot ina kom katha ko lei chuk kana unko do ko erad chuk kana akwa ke mare nagam babot te oka do all bill re Norway disum re se ita re nyamok kan ar aku do adi thoda gan itang miten puthi ge sona leka ko damak kana inte onage unko then mena ar un re inya ontor do adi bhabna ina ar iñiñ gunan kida che jahana in chika dariya an ko hor hopon jate aku age mare nagam oka alele badai kan menkhan unko do ko erad uchu kan una babot te jahana in chika dari kiya. And this was the beginning of my rethink of my whole book project. I left the plan for a small book in Norwegian and I began to think I must write a history for our peoples on both sides of the Atlantic in English, so all our people can become part of the same history and understand that giant history. Ar una sopot en ghotna hote te inya men to sadena ar inya oka pontha tahe kan je indo Norwegian parsi te mitten inya oka anatkar kan huding mitten puthi ola ona do bagi da podada ar jalakhar hanasa namasa aboren hor ko ape ar aleren hor ko
abu kuwa oka senelet re oka nagam mena ona nagam babote indo ingreji parsi te all important na jate abu mare katha ko abu joto hor bun badai. And then my second eye-opening moment was a couple of years earlier when actually I invited to Norway Brother Tonal to a conference up in my university, and that was very important for me to invite to Tonal brother, but I also realized that somehow your ideas about Norway, which was colored by your parents, by the priest, by your grandfather who was a pastor, there was some kind of mismatch between our society now and the kind of ideas and imagination you had nurtured down here. So for me that was a very important realization, and I'm very glad you were willing to allow me to realize this. Inya dosara armiten met sara ghotna do unre huina tinre aleya বিশ্ববিদ্যালয় re mitten সম্মেলন re indo tonal goi han neutale dia oka সম্মেলন do inhe girghodin tahe kana ar uni saute galmarao talate alele bujheu kida je hor hopon se santal ku norway babotte oka hudis oka gunan ria chitar mina taku una do ale ni oka norway disam le niele onena oka hal kan halot kan una saute kina tar antara kana nuku do akuren hapram ko akuren naiki ko hotete oka jinis ko chit kichu kan edi mohotana edi dular satala mitten chitan darjare ko doho ka unkan gunanan jaga re do ale norway disam ria somaj do ar banua menkhan noa tar antar babotte do unku do bako badai kana ona do edi bhagte tonal boiha saw unre ale jele epen chapalen ona galmarao talate ya esat chokida. And my third eye-opening moment was when I interviewed members of the church elite of NLC. I interviewed them in Santal in 2014, and I interviewed them about how they experienced Norway and Denmark when they came for official visits, invited by the Santal mission. That was very interesting. और 2014 रे इन्या में दो अतिसार धाव लगित साड़े ना तीन रे इंदो डुंकर रे नॉर्दर्न इवेंजलिकल लुथरन चर्च में चले वो को NLC रे चले वो को साउंडे इन्हीं न्यापल न्यापामना कथा को ले पेम चपाल किदा उन्हें गाल मराव पे कुछ हो किदा उनको NLC रे नकोई चले वो हुदुदार को आले दिसंबर को तला रे जोनोडाल रिया मिटेन किचा मिनाआ आले तलारे मरान फाक मिनाआ नोआ दो 2014 साल रे दुमके रे उनको हपड़ाम को सांते से चाप चलाव को उनको सांते गालमराव तलाते इन्या में मासाल चुके. And what I found in the interviews was that the elites who visited Norway were very confused about the Norway they visited. It was not the Norway the missionaries had preached about down in Santal. The Norway they met was so different. When they were to go to church service, they found that there was hardly anybody worshiping in the church. When they were out in the street, they found drunk people. And you know the legacy of the Santal mission in terms of prohibiting alcohol, you know, and they thought basically that Norway was a Christianized worship, 100%. So they were absolutely confused. But the thing was, their host from the mission was also embarrassed. So they did not explain their guests these actualities. So there was a huge gap in communication. It was like the time capsule had stopped in the 1960s when our society became secular. So this gap, I decided I should somehow meet and fill this gap. NLC ren गिरजे चलाव को और हपराम को उनको सामने गालमराव चलाते बुझाव किदा उनको मन रे नॉर्वे दिसम बाबते ओका गुनन नक्शा मिना
ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱨᱤᱥᱛᱟᱱ ᱜᱩᱱᱟᱹᱱ ᱱᱟᱠᱥᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱜᱩᱱᱟᱹᱱ ᱱᱟᱠᱥᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱮᱱᱛᱮ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟরি ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱠᱥᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱨᱣᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱠᱚ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱱᱟ ᱩᱱᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱤᱨᱡᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱴᱣᱟᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱭᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱯᱷᱟᱫᱟ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱧᱩ ᱵᱩᱛᱟᱹᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱟᱸᱴ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱹᱥᱩᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱨᱣᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱢᱟ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱮᱞᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱠᱚᱨᱮᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱱᱚᱨᱣᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱜᱤᱨᱦᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱫᱚ ᱜᱩᱞᱢᱟᱞᱟᱣ ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱨᱣᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱩᱢᱟᱲ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱞᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱵᱩᱞ ᱵᱩᱪᱟᱹᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱤᱨᱡᱟᱹ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱫᱮᱣᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱦᱟᱞ ᱦᱟᱹᱠᱤᱠᱟᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱵᱮᱜᱟᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ te ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱫᱚ ᱜᱩᱞᱢᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱛᱮᱞᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱝ tahᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ. So these are my 3 moments of realization which motivated me. Then there is a 4th very important thing, namely that the Santal mission in Norway gave me permission to do research in their historical archive. They had their own historical archive going back to the beginning of the Santal mission in 1867. So that was like 150 meters of files, not very organized, but in a sort of filing room. So I was the first secular researcher ever to be allowed into their archive. नवा को पेने में चढ़ो घटना के इन दो उद्गव की दिया नवा मारान खंडरों पुथी ऑल लगी और उना कमी रे तो बड़ा न्याम के जामिटेन आहारा के अचका के बोझ आस्कान ताहे लेका नॉर्वे रिया संताल मिशन आकुआ आर्काइव से आकुआ पुथी गार हिरी लगी उना उटा नेल लगी इनको नेता की दिया और इंगे धर्मनिरपेक्ष खंडरों को तलारे दो पहिल उतर मनवान ताहे ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱱᱚᱨᱣᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱭᱵᱨᱟᱨᱤ ᱥᱮ ᱟᱨᱠᱟᱭᱤᱵᱷ ᱮ ᱧᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱷᱟᱹᱲ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱫᱟᱥᱛᱟᱵᱮᱡ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱭᱤᱞ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱩᱪᱷᱟᱹᱣ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन 190 ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱫᱷᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ 150 मीटर जगह धरे संताल को बाबत तेगे एकेन नथी ओंडे रखी जोगावी ᱧᱮल केदा. So I will talk more on the archives later. Next, please. Here you just see by photos what I talk about, these glaring gaps. Dr. Hodner's tiny booklet, and you see there also the Santal dictionary in modern version, and also I could have piled there like the 3 volumes of Santal history in Norwegian. So you can imagine how tall that bunch of books were. আর নোয়া কো মনে গটে নাকসা রে আবো বন নেল দাড়ি আ ওকা সদর আকাম পুথি কো মুচে দুতে দুবন নেলদা 1960 সাল সেন রে ডক্টর হটনে ওকা ইতান ইতান কটি কিটান পুথি ওলকা পনারিয়া নাকসা ইনে ছডা কাতে লাতার নাখারে গজন সেন বন নেলা বোর্ডিং তুমলকা ওকা সাবাদ মুরই ওকা দ মনে গটেন হটিং রে হটিং কান ওনা রিয়া নেবেদার দিন রিয়া রাদা রিয়া নাকসা আর ওনা ছডা কাতে গির্জে উড়া সমান রে বারিয়া নাইকে কিন তেঙ্গু কান ওনা নাকসা কো আর নোয়া কো তালাতে লাহাসেন বন বাড়াও চালাও. Next. So again here you see my summary of what I realized gradually, unacceptable differences between other people and you in terms of access, because of language barriers, because of distribution barriers, because of access barriers. So, and you see also the heaps of books there, mostly again in Danish or Norwegian. पर्सी होते थे ओका ठके मिना पर्सी होते थे ओका ठके मिना ओका दो बाडाई तलारे मिटन टटी ऐसे रखा है और उनको और उनको बाबते इटा इटा
kursi Norwegian te se adjusti kai do English te all akan ini jarwa oka nunu gotan puthi bina oka do hol hopon ko do ako babot te badai bonu takwa ar oka do babun angoj dare kiya chida unko do ko ere uchuk kana nunu gan jinis badai kondo. If you look at the violet book to the left, which has the main title Santalia, that is written by Santos Kumar Soren, who moved to Denmark when he was young and married a Danish girl. He has written that catalogue of your manuscript. I will tell you more about it. Lena nakare kurse bahar rongia mitan puthi bon nelda okariya boho katha do asol to do kan Santalia noa do manotan Santos Kumar Soren hotete mare oktere all lena tingre do ne juan career Denmark disante tahe uchod lena Denmark range miten tille okone bakla le dia un okte Santal ko babokte rakhi juga puthi koriya miten nathi miten telkha onai sapraw leda Santos babu ona puthi kana noa babokte do time ta apin leya buna. Next. You have a unique manuscript collection which is nowadays managed by Norway's National Library. Adi hahara tite ola buland ko ria pandolipi mena Santal ko babokte oka do tite ola kan a mit barya do type ka oka do Norway ria puthi gad re do ho kan jatieri puthi gad. I investigated who has visited the collections and used the collections since it came to Norway about 100 years back. আর ইনি পাঁজা নাম কিনা মিট সাই সেরমা পারম কানা নোয়া রেখি জোগাও গুড়হে পুথি কো দ নরওয়ে রে এগু চলেনা ভারত দিশন কোন আর নোয়া সাই সেরমা রে একেন ভারত কোন বার হড় কিন চালাও লেনা আর ওনা কো উটা নেল কাতে ওনা কিন লাড় ছাড় কাদা সাই সেরমা রে একেন বার হড়. And I found something very interesting. Between the last manuscript was sent over to 7 seas to Norway until it was catalogized, more than 50 years passed when it was just lying by these heaps in the museum. আর মুচে উত্তর গুড়হে পুথি ভারত দিশম খন হর সামটাও কাতে নরওয়ে দিশম তিন রে কোলেনা ইয়া ঝালাপুরি পারম দিশম রে ইনা তায়ম খন দ মণেগেল সেরমা পারম কানা মণেগেল সেরমা. So it was Santos Kumar Soren, who was founded by the Santal Mission in Oslo to stay in the collection for 6 months in 1971, and he was a librarian, so that's why he could more or less catalog everything within 6 months. It was an amazing job. আর মানতান সন্তোষ কুমার সোরেন উনি তো দাওয়ে নাম উচুদলা এনতে নরওয়েরিয়া সান্তাল মিশন উনি তো কো গুড় তবে না দে তাহে কেনা আয়া তাহেন লাগি ওকা তো তুরুই সেরমা লাগি ওনা পুথিগার রে তাহেইনা ওনা রিয়া মিটেন ফিরিস্তি বিনাও কিদা সান্তাল কো বাবতে না তিতে ওলা টাইপা গুড়হে পুথি করে না মিটেন লিস্ট আর ক্যাটালগে বিনাও পুরো কিদা 1971 সাল করে. And while he was in the collection, Santos was able to make the first draft of this catalogue. But the people in the library did not understand the importance of Santos's work, unfortunately. So he actually kept his manuscript for 25 more years before in 1999 only he published that book I showed you. আর হাহারা রিয়া কথা কেনা মানতান সন্তোষ সোরেন দো 1971 সাল রে নোয়া তলখই বিনাও কিদা সান্তাল কো বাবতে তিতে অল বুড়হে পুথি কো চিট কো nyutumana bina a menkan ona puthi garren chelewo ko santosh babua noa kami ria hamal te ona ria mohot te to baku basuta kaya ar ona tege uni to
ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱡᱤᱢᱟᱹ ᱞᱮᱫᱟ 29 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱟᱡ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱨᱟᱹᱠᱷᱤ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ 1999 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱷᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱮᱴᱟᱞᱚᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱛᱳᱥ ᱵᱟᱵᱩ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱱᱟ. So only then from 71 it was possible to visit the collection and find their way because it was catalogued. So I tried to investigate who were there from 71 onward. And I found that it was mostly European scholars, plus sometimes the Santal priests who were on official visit, they knew about this collection. So they spent a little time, but they didn't research it, but they visited the collection. They were perhaps the most regular Santal visitors, apart from that Santal Kumar Soren, he alerted some very prominent Santals from India. Some were ministers, some were at Santiniketan, and they made some official visits to the collection, but they were very few. 1971 साल खन इन दो पंजा किदा नोआ गुड़हे पुथी रिया ओका हर जारवा ओना दो अकोय को लाड चाड़ कदा ᱧᱟᱢ ᱠᱤᱫᱟᱹ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱤᱭᱩᱨᱳᱯ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ 15 ᱫᱤᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞᱤ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱦᱤᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱛᱤᱛᱮ ᱚᱞ ᱜᱩᱲᱦᱟᱹ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱵᱤ हर जरवा दो अंडे मेना उनको उना दो हिरियत कान ताहे कना मेनखान संतोष बाबू छाड़ा अकोय हो उना दो खुदे खुद दो बाको लाड़चाड़ लेदा और मानवतान संतोष सोरेन के भारत दिसम रेन मिद बार हर को अकोय दो नुआ गुड़हे पुथी रिया ओका हल सामटाव जरवा उना भंडार ओका ताहे कान उना मुरई बाबते आह्वान के हुआ उनको रे अकोय को दो भारत सरकार में मंत्री को ताहे कना अकोय दो शांतिनिकेतन से इटा जगह करे प्रोफेसर को ताहे कना और उनको आह्वान के हुआ उनको दो ऑफिशियल हिरी को चलावना नॉर्वे दिसम रे ना सांताल को बाबत रखी जुगा ओका मुरई वही हम हिरी लगी. And as I think some of you know, either because might be your grandparents or fathers were involved, or might be even yourself, that from mid-70 onward, people from your society here and Dr. Hodler began to write letters to Oslo and request the leadership to get access to the manuscript. And this was what finally, after might be 6 to 10 years of correspondence only, you got this decision that it should be reduced on micro scrolls and sent to some Indian institutions. And you probably know that story. और आपे तेहिन नोडा पे है सटेरकन आपे पूरा ऊपर ऊपर खुद पे बढ़ाया से आपे रेन गो बाबा से गोड़म बुढ़ी से गोड़म माँ उनको ठेन खन पे आजम कदा 1970 रिया गेल सिरमा तालामाला से उन्हें लोहा खन नॉर्वे दिसम रेन डॉक्टर हॉडने और आपे सोसाइटी रेन हड़ाम हॉड को उन रेन चलवा को आपको ताला रे चिट्ठी ते और ऊपर को एहबना नोआ संताल को मुरई बाबो चिकाते उना दो आर्म संताल को पढ़ो लगी गुण लाचार दाड़े के और उना दो सबका मैं तुरुई से एआई सिरमा गान से इरल सिरमा गाल धरे उनको दो चिट्ठी ते को रोड रोपड़ना एमएपएमिना को और अकटे बढ़ाया उना दो उना मुरई दो माइक्रोक्लिप लेका को मार्शल नक्शा रे को उचड़ किदा और भारत दिसम रिया आइमा गणठन ठेन आइमा बनाठाव ठेन उना दो माइक्रोक्लिप रिया मुठते उना दो कोल रूल उचुइना नोआ दो पासे आपे पे बढ़ाए कदा आपे आ सोसाइटी The photo to the left, you see the building of the Museum of History in Oslo. लेना नखारे का दोलान बुन नेले उना दो ओस्लो भोग नगराहारे ओका नागाम बाबतिया ओका रखी जुगा गाड़कान उना रिया मिटे मार्शल नक्शा बुन नेलदा. And that building was opened in 1904, the year before Norway became an independent country. और नोआ रखी जुगा गाड़ दो नोआ
dolan re udhaw uchulina 1904 খ্রিস্টাব্দ রে মেটা মে মিট সেরমা লাহারে তিন রে ডেনমার্ক খন নরওয়ে দিসম do armai purgal ruwad lena. And you know, I'm sure that Bodhisattva, he was the chief collector of a huge collection which was began collected in quite early after he came in the 1890s, but this collection went on nearly until he left India in 1934. But already when this museum opened, it had a very good collection of Santal objects. Node bon badai kana boarding saheb do har samtaw re marang utar guru lekate kami leda ar uni ar aj sauten ko hor hopon ko sapap ko unkuwa tin jurit ko unkuwa aima lekana durit ko uni do har samtaw leda ar ona do santal samtaw ona mente bon badai kana menkhan boarding saheb ona ko hande idi lahare ge नॉर्वेरिया नवा भोग नगरहारे संताल को बाबते अडी मारान मिटन संताव ऑलरेडी ओंडे दो हेड सेटर kan tahe kana boarding aya hel santaw onde jimoi laha lege. So in few keywords you will see there is a big chapter on this in the book. It gives you a lot of new information, but what I wanted to stress right now is that in total you could say that the prehistoric part of the collection, stone axes, plus the ethnographic collection, in totality is one of the world's largest collection of items from any indigenous people in Asia. It's amazing. Noma puthi re adi kailaw te ol mena adi khato katha te menda noa do nina gun badai dadiye je noa Osloria bhog nagrahare uka ruki joga guard re uka hor hopon babotte hol samtaw mina onaria ethnographic uka hol samtaw kan nagam manam okte dhiri jug korena hol samtaw ko kan uka mina node khon boarding ar eta ko hol samtaw ko hote te onde soj jarwao kan ona do Asia mahadisam ren jahai jed babotte धरती तलारे मिना मारान उतर collection से हर समताव कना. I will talk more on the collections later, but I just wanted to say here and now that this beautiful building from 1905, your collections were there for more than nearly 100 years. Time te apni roda noa santal hel samtaw babotte menkhan node ebong niela noa moj dulan bhitri re santal ko babotte oka hel samtaw mena ona do di bamana ar di mohotana kana ar di maran dia. It was mid size segment puro kida. In 2013, when I had already worked on this project for about 3 to 4 years, I visited, and at that time the collections had been moved to a new storage place which was very modern, which cooled down all the items to a very safe temperature for conservation. So they are now in this new space, no longer in this historical building. 2013 सेरमा kon ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱹᱠᱷᱤ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱜᱟᱲ ᱦᱤᱨᱤ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱫᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ 2 বছর দিন ধরে হিরি উকাদা আর হড় হপন কোয়া ওকা হল সামটাও ওনে তাহেं কান নিত ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱚᱡᱽ ᱫᱚᱞᱟᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱚᱡᱽ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱞᱟᱱ ᱨᱮ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮ ᱨᱟᱹᱠᱷᱤ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱛᱮ ᱦᱚᱭ ᱛᱮ ᱮᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱞᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱚᱥᱴᱚ ᱟᱞᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱜᱟᱸᱰᱟ ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱹᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱸᱫᱷᱟ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱨᱤᱛᱤᱵ ᱨᱮᱭᱟᱲ टेम्परेचर को दहो कदा अंडना होय हम को कंट्रोल कदा और ओना को अडी मौज हालत रे अडी मौज कंडीशन रे मिना और नित दो नुआ मारे दोलान कम दो और हम लड्डू मिटन दोलान रे उचड़ दी चू kana. But for sure both the manuscript collections and these collections your people has overall had very limited access for those generations. So I decided that I should not just write the book, I should also raise my voice with these museum authorities that they had to put more effort into making
collections available online so that also external users elsewhere, like in India, Bangladesh, Nepal, could access the collection and understand it in terms of language. मेनखान बड़पन को बाबते तीते और बुढ़े पुथी को रिया हर संताव से नुआ को तीज दूरी को बड़पना उनारिया हर संताव नुआ हिरी रिया का हक ऐदरी कोना दो बड़पन से दक्षिण एशिया भारत बांग्लादेश नेपाल रेन खंदरन दिए को और अलग पढ़ा को लगी दो अडी जाउडी के बिना और उना लगी इन तो इन्या अड़ानी तावगा किदा नुआ रखी जगह गार्ड रेन कोई चलेवो को कान को म्यूजियम डायरेक्टर को कान को जाते दक्षिण एशिया रिया नुआ पेने दिसम खन कोई रिसर्चर को से खंदरन दिए को चला उनको तो जाते उना को तीज दूरी और उना को पांडुलिटी रे एक्सेस को न्याम आपको कमी लगी. Next. So these reasons made me in 2014 to found the Scandinavian Santal Heritage Initiative, which I have led since 2014. And the main purpose of this initiative has been for me to connect, as we now know, transnational is a very key word, to connect your people and your institutions in India and Bangladesh, or mostly with our institutions in Scandinavia. इया नवा अनाटकार उना अनाटकार तिगे अब सेमेलेते बड़ो बड़ो कुरुमुटु एहत रिया मिटेन कारण होइना 2014 साल पर स्कैंडिनेविया और सांताल कुआ इनहेरिटेंस से जुगधन ओनारिया बड़ो बड़ो मिटेन माळम बेनावना और उना कलाते हड़ को लेकाते आते को और आले को चिकाते बुन बड़ो बड़ो आ उना लगी उना माळम दो उन कोन नित भी कमी दीदा. And also I began to use social media to connect people together. So I formed a closed Facebook group which has grown since 2017. I opened that group for people. And also I have done a lot of advocacy in terms of, written things for the UN Indigenous Day in August, for magazines, talking with the authorities, everything for motivating them, for realizing their responsibilities and speeding up their work. और दिसम रिया सिंगु पावन खाते आबुरन हड़ को तलारे नवा गड़ो गड़ो लगी दुका माड़म बन बेनाव का ओना दो उन कोन सामाजिक माध्यम से सोशल मीडिया रे ऑल ओपलते हड़ कोई हल संताव का कुआ आइमा हजार हड़ नित दो ओना रिया फेसबुक माध्यम का ओना साउथ को जुड़ाव करना और ओना छड़ा खाते कोई तो चले वो को कान को अब बनाधाव को दिसम रेन को उनको हो नवा बाबते दो को बड़ाए कदा उनको आइमा नवा रिया कथा को रोड रखा चुकना. And by 2014 I had changed the plans for the book, as I told you a bit earlier. Now it was a huge project, both using the archives in Norway, even in America, in Denmark, here, plus that I had a lot of material I had collected during my journey for the first nearly 30 years. I showed you that period in the beginning. So all these were sources for my project. तिहिnya तारीख रे अब बन तिंगु कान नवा दो अडी मारन मिटन प्रकल्प कना ओकारे दो नवा पुथी हो मेना आ नॉर्वे दिसम रे ना हड़ हपन को बाबते हल संता हो मेना और अटलांटिक जलाकर पारम काते ऑन पारम अमेरिका दिसम रे से डेनमार्क दिसम रे से आपे नोडे पेने दिसम रे नुको गड़ो बड़ो तलाते नवा पुथी नवा सामाजिक माध्यम ते झनोड़ा और ओना रखी जोगा हल संताव को नवा होते और इन जे नॉय आपे को हिरी हिटी रिते पे गेल सेरमा दिन खनी कमी कान नोआ होते तिहिं दो अडी मारान मिटन प्रकल्प रे गुण है सके रकाना. Next please. So from 2014 I invited the Museum of Cultural History and the National Library to join my university to organize a huge Jubilee Symposium in the Jubilee year of Paolo Bleie, who was, as you know, born on the 2nd of November. So gradually we
of indigenous scholars, civil society leaders, all the key scholars on the Santal were also there, and also retired missionaries were invited, and people from Nor Mission, Dan Mission, and so on, and also the descendants of the pioneer missionaries, like the grandchildren of Mama and Papa and others were there. আর নয় নোয়া জেত রিয়া সিংহনা পারম বড় বড় মানব রিয়া মিটেন তাড়াম লাহাই কৌড়ি লেকাতে 2014 সাল রে ইন দো অসলো বিরদাগার আর মিউজিয়াম অফ কালচারাল হিস্ট্রি उनको हम नेता के कुआ आले या फ्रांसो बिरदागार धरती रे बिरदागार साथे बड़ा बड़ा मिटेन गो कथारे को हजू और ओना होते ते पॉल वाला बोर्डिंग साहेबा साई शर्मा जाना महापुर क्रिया गांव रे आले दो बोर्डिंग सिम्पोजियम मिटेन ले हुई चुकीदा और ओना रे दो नेता बगन पेड़ा लेखाते आपे भारत दिसम खन और बांग्लादेशम खन आइमा हर हपन और एटा आदिवासी को उनको दो ओंडे को सेटेरना और आदिवासी को छड़ा करते आइमा रिसर्चर को खंदरन कमी कान को और दिसम चालाव रे भोग भर ओंडे को सेटेरना और मीत को नेपेल जरवाइना. Next please. So this symposium in 2015, which collected about 100 participants from all over the world, decided to speed up their collaboration and do much more. So I wrote a so-called plan of action, which gave responsibilities to everybody who had been involved. That means our institutions in Norway, over here, Santal and Ibasi focused NGOs, Indian museums, the missions, faith-based NGO, everybody were requested to speed up the work. और बोर्डिंग सिम्पोजियम ओका दाव हिरी हिरी और हेलमेलो ओका दावे एमाट बोन ओका दो नोडे बोन नेमदा 2015 साल रे ऑस्लो रे ओरान लेन ओंडे दो नॉर्वे दिसम रेन ओकोय को ताहे कान खंदरन दिए को ओंडे रेन मिशन रेन चले को उनको छड़ा करते हो अपेया नोडे ना बनार दिसम खन ओकोय संताल आदिवासी समाज कमियन को मिना को खंदरन कमियन को मिना को एकेडमिशियन को मिना को उनको हमको नेता चलना एमन चे गिरजा चालाव को मिशन रन कोई चलो को उनको हम अकुआ कथा अकुआ अनाटका ओंडे लई सदर लेकिन को नेता चलना आ कोलकाता रिया ओका इंडियन म्यूजियम देना ओंडे रन चलो को आ कुंद्रोंदिए को ओनार को सेलेक्ट देना और अड्डी माराम अकाइते नुआ विषय चितान रे मिटेन हेलमेल होइना. Next. Here you see a photo from the boarding symposium. You see the pictures here of the delegations from India and Bangladesh, and at the back there is a quite well-known Santal missionary. He's still active, though he is retired. And to the left, you see the participants being allowed to visit the collection. And I made a lot of effort so that the museum should open the collections for the participants, because that was a chance of a lifetime for quite some of them to be there. एतन नखरिया मार्शल नक्सर को नेला भारत दिसम आर बांग्लादेशम खन ओना बोर्डिंग सिम्पोजियम रे अकोय उजी को सटरलेन उनको आ मिटेन मार्शल नक्सा और उनको कुडम रे अकोय तेंगु कान उनी दो नॉर्वे दिसम रे मिटेन अडी नामजद मिटेन मिशनरी कना कमी खना जिराव काना मेनखान नित हो कमी तला रे मिनाया उनको मित साउते नुआ मार्शल नक्सा लगी को तेंगु काना बन नेल दाड़िया काना और कोय नखर बन नेला हड़ कोना का सपाप को का दुरित को ओंडे संताल हर समटाव रे रखी जोगाव कान ओना हिरी लगी हो भारत और बांग्लादेश खन कोई उजी को चलावलेन उनको दो पहिल दाव को नाम किदा ना हिरी के अकवा मेते नेल लगी और होई दाड़िया उनको जीवन रिया ओना दो एकन मिटन के एडी मोहतना दाव ताहे कना तीन रे अकवा मेते बोर्डिंग और उनिनन गोपड़ को होते ते ओका हर समटाव रखी जोगाव कान ओना नेल जुत का. Next please. So after 2014, as I conclude, by that time I had changed my research design. It has become a very huge project, and
I use a mix of mostly qualitative methods, but as I have also mentioned, as based on the plan of action from the Body Symposium, I also started heritage consultations in India and Bangladesh. I continued advocacy for your access to the collection, and I also began to mentor young Santals and others who wanted to work on culture entrepreneurship. At 2014 साल खन इnya kontrol kami hora ria oka link te chalakan tahekan ona redo mitten bonodol heitna ar ing do gapal marau torpan talare gapal marau sohot gorowa ona kami hon dhureuna ar rod rakap nuku ko hor lagi rod rakap ar okoy noa kontrol kami re juan pidhi re ko kami sanai ko unku ti sap kate ona kami re dorho ko noa ko kami joto noa adi marang kami kasri ria mitten his roina. Next. Here you see to the left a photo from one heritage consultation visit I did to the Santal Education Center in Johannesburg in 2019, where this language hub with Samar Soren and others were inviting me for a seminar with many young people. So we debated there the digitized future of Santali language, the script problems and everything. আর নোয়াকি মার্শাল নাকসার কোন নেলা 2019 সালে বাংলাদেশ রিয়া দিনাজপুর আর ঢাকা রে মিডটেন গালমারাও সভা বারিয়া গালমারাও সভা ওকাটা রেদো ওকা ল্যাঙ্গুয়েজ হাব ওকা দো মানকান সমর মাইকেল সোরেন হতেতে এই রুচুক কান उनको इनको नेवता लेतिया संताल को पर्सी संताल को ऑल बेल अखरते ओका ऑल रखी जोगा ओका नित दो नवा जुग रे ओना दो डिजिटल मीडियम रे चिकाते बन उचड़ दाड़े के या ओना रे तारघाट आमते गालमाराव लगी नोआ की गालमाराव दो ओराम लेना. And to the right there is a very memorable moment for me, because I revisited my first village in Johannesburg where I lived as a young girl in 82, and here I'm back in 2019. Many of my dear friends had died, unfortunately, but some were still in the village, like these women were still there, elderly, and it was very emotional to meet them. আর ইন লাগি আডি মহতনা মিটেন ঘুড়ি রিয়া নকশা কনা এতন সেন রে ওকাবো নেলে ইন দন তিনু কান আর পেয়া গাতি কুড়ি ইনরেন নুকু দো আর হ 1982 সাল রে উনকু সাথে তাহেনি নেহব लेना দিনাজপুর রিয়া আতু রে আর 2019 साल रे उन सेमा तायम उनको दो आर हन हिरी रुवड़ के कुआ बे भक्ते हिरन आयमा गाते कुड़ी दो को बोंगा तला ओकान ताहे कना मेरखान नुको को दो उन रे हो जीवन के को ताहे कना आर ले नपाम आरोइना आर इन लगी ओना दो अडी अंतर लड़ावना मिटेन भवितो लेकाना मिटेन ओक्ते ताहे कांतिया. Next. Here you see some glimpses from the conferences I have co-organized over many years. You see to the left, you see a picture there. I was not the organizer, but there I was invited. That was here in Calcutta in 2019, I believe, at the Asiatic Society. You see also there very good colleagues of mine, including Professor Peter Anderson from Copenhagen is sitting there. আর নোডে দো মিট বারিয়া ঝলক কো নেল দাড়িয়ে আ যে ওকা কো সেমেলের কো ইনি উরামলে সে ওকা কো সেমেলের রে ইনি উরাম নেতা উচুলেন লেগানা খাবো নেলা ওনাটা সেমেলেন ওনা গালমারাও রে দো ইন দো উরাম দো বইন তাহে কানা মেনখান ওডে নেতা উচুলেনা আর উনকা গে নোডে আমেরিকা দিসম রিয়া কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি রিয়া আর মিটেন সেমেলের কো নেল দাড়িয়ে আ ওকা রে দো নোয়া বাবতে কমি চিতান রে এডি মোহতনা গালমারাও তো হই দিলনা. And that symposium in New York, that led me to write the chapter on Santal witchcraft. So I have tried to rethink Santal witchcraft in a new way. Brother Tonal, he knows about this. It's a quite
huge, complicated thing to explain here, but you should know that I have tried to rethink what Santal witchcraft is all about. আর নিউ ইয়র্ক নাগরা হারে একম সেন্টারে ওকাটা সিম্পোজিয়াম রে মার্শাল নাকসা বল ñelta onde oka ko galmarao hoilen ona hotete indo udgauna ñam leda ar noa puthi re santal ko talare deno oka birda dina oka witchcraft ona babotte inya oka hati noa puthi re all kati ona babotte all rea udgawi ñam kata ar noa babotte do tonal moha hoy badaya adi phailao jinis kana adi gulmalao jinis kana menkhan indo in leka kate ona bisoy lei sodor rea in kurumutu kata. Next, I've already said that as a Inherit, we then began a huge work in the archives from 2012 onward. We did advocacy for scaling up the digitization, and we had different meetings. Here is another co-organized conference in Copenhagen. That day, it was the Down Mission who invited us to have that day on their very beautiful estate in Copenhagen, and you will see among the participants there, you will see head of the manuscript collection in Oslo is there. You will see Evie, right? Hasta is there. You will see Borobaski is there, and you have Sibu Soren from Birgum is there. You have also Livia Hasta, the filmmaker, is there, and of course our Santal Soren was there, and I was there, and also some of the old missionaries were there. আর নোয়া এসএস ইনহেরিট মারাম হতেতে সান্তাল কো লাগি না থিতে और बुढ़ो पुथी को डिजिटल मीडियम रे उचड़ रिया ओका कुरुमुतु चला खान ताहे का ओना दो बन चुगुड़ उचुकिदा आ चुगुड़ उचुकते नॉर्वे दिसम रे नॉर मिशन अपन निजी पुथीगार ताहे का से डब्ल्यूपीएल रिया अमेरिका रे ओका निजी पुथीगार ताहे का से डेनमार्क रिया भोग नगरा हारे दान मिशन रिया ओका निजी पुथीगार ताहे का ओना को पुथी दो डिजिटल मीडियम रे उचड़ रिया कुरुमुतु चुगुड़ उचुकिदाले और हिरी पिरी लेकाते नोआ दिसम खन अपेया दिसम को खन आले ठेन चला हर को ओना दो जरी ताहेना नोआ मार्शल नक्शा रे बन नेला नोडे मानतन संतोष कुमार सोरेन पे नेले कना इन पे नेले कना आपे दिसम खन हिरी को चलावले मनोज हेम्ब्रम से दिव्या हांसदा और एटा समाज कमिया को मरियम हांसदा नुको तको आइमा हर आले दिसम रेन किछु मिशनरी बनवा मार्शल नक्शा रे पे नेल नेको. Yes, and you see here that I mentioned in the bullet point 2 about the Down Mission digital photo archive, which opened in 2018. And if you don't use it, I recommend that you begin to use it. It is 15,000 photos are digitized and available for you. It's a quite valuable collection, even though it's not professional photograph, but they are still very valuable. So I put here for you also the address, so you can search it. दोसारा उदुक टुडे रे इदो दान मिशन रिया ओका आपवा पुथीगार ताहेकान ओना ओका डिजिटल मीडियम रे को उचड़ का डिजिटल फोटो आर्काइव बाबत तैन देइदा ओंडे दो 30,000 लेखा फोटो डिजिटल माध्यम ते अब इंटरनेट ते बन ᱧᱟᱢ दाड़िया ओका जो 2008 रे ओकन धरती रे सना मोड़ को लगी हाट कते ओटा आकाना जहां गे ओना दो इंटरनेट होते तो को हिरी दाड़िया और आपया बाडाय लगी ओना रिया ओका जोड़ाव सिकड़ी kan ओना दो लतार रे ओना रिया लिंकिंग एम कदा नोआ पे व्यवहार दाड़िया. Next. Now I will introduce you to some key understanding which is very important for understanding what I have done with the archives. আর নিতো ই আপে তালারে বর্ণন সনাই দিয়া ওকা রেখি জুকাম রিয়া ওকা মুরই তাহে কান ওকা আর্কাইভ তাহে কান ওনা আর্কাইভ তো ছি লিখাতে কো সাজাও রহ কাদা ওনা রিয়া লাড়চাক রিয়া ধারা ই মানে আপনার কা ওকা লিখাতে ওনা ব্যবহার কা ওনা লই আপে কানা. So a colonial archive, how should we understand it? मिटेन दखलिए रेखि जोगाव मुरई ओना दो चिकाते बन उपमाटिया चिक काना कॉलोनियल आर्काइव दो
it is not enough just to say that, okay, the missionaries built the archive mostly in the colonial era until 47, so that's why it's a colonial archive. That is not the useful description for research. नोआ रोड तो जुथात तो बंद हुई हो आज ये उन्हें कॉलोनियल आर्काइव तो मिशनरी होड़ को होते थे गढ़ाव रकाब लेना से मिशनरी को उन्हें तो उन्हें रिया तेत को हर संताव कदा को जरवाव कदा को नोआ रोड तो अड़ी जुथात तो बंद हुई हो. So I understood that the archive, which is now mostly in one place in Norway, when I researched it, those archive, right, has been the accumulation of correspondence in our transatlantic world, right? It's letters, it's telegram, it's visit, everything which has circulated and become on paper and documented are accumulated in that archive. We must understand that. नोआ हर संताव मुरई उका दो धीरकाय पहटा दो हम दो नित ओस्लोरे में ना इटा जगह को साउते उना रिया तेते को का मिना उना दो अब बुझे हुई तब उना दो कल कते आजाओ कना उना दो MFM जलापुरी हनासा नोआ सरन बड़को तलावा MFM रिया आजाओ ते कना उना लिखाते हर संताव कना. Next, we need to emphasize that these archives has a lot of information on property accumulation because the Santal mission became a huge landowner for one. For two, they had to recruit memberships and donations from the Scandinavian countries and gradually from America. So there's a lot of also financial information about how they organized the support committees, how they preached and collected enormous amount of financial resources and brought them to India. So that's a very important part of the colonial archive. नोआ हर संताव मुरई रिया मिटन मारान अकाय पाटा दो ची बाबत कना जे ओना दो धन दुरीब को संपत्ति चिकाते हर संतावना ओना रिया लेखा जोखा आर विवरण कना नोडे बुझे हुआ नको मिशनरी साहेब को तीन रे नोआ दिसन रे कमी को है ना दान लेकाते किरिम लेकाते आयमा जुमी जगह को अपना जो ना एक्वायर किदा को आर ओना कमी पूरे लगी जलापुरी हनासारे अकोरेन सहदिए को उनको तो धन ते दुरीते टाका ते पैसा ते को बड़ा लेकवा आदो ओना कोरिया विवरण ओना को धन दुरीत टाका पैसा लाडचार रिया लेखा जोखा ओना रिया ओका दस्तावेज कान ओना दो नोआ हर संताव मुरे रिया बिटेन लेटू अका ही से हटाओ कदा आर अडी निजमा खाना नोआ कथा अब बुझो तो. So a colonial archive is a storehouse of memories and voices. Question is, what kind of memories? Whose voices are in the archive? उनका लिखाते नोआ colonial archive जो उन ऑक्टेरिया उइहर कथा कोरिया बिटन मुरई कना उन ऑक्टेरिया हिसाब करना लेखा जोखा रिया विवरण कना आदो नोडे तो पुली तो ठीक कना ची उना को हुदिस उना को उइहर नुवर दो उका धारा रिया उका धरन रिया उइहर को कना उका कना लेखा जोखा कना उना को पंजा देते. So you will see in New Testament in chapter 2 I make a very rigorous analysis of the Santal mission's historical archive, trying to define whose memories are there, what kind of memories, because we need to understand that the missionaries did not only send and file official correspondence, they have a lot of semi-official correspondence where they mix some official information with some personal information. They have personal correspondence, and even quite some of the personal correspondence are in the archives. Noa archive re oka ko mina ona ko do okoi ko uihar kana uka lekhana uihar kana ona bon panja lekhan bon nyela
उनको मिशनरी को उका को ऑल का उका ऑल चाल एपएम कान को जलापुरी हनासा नवासा उना भितरी रे दफ्तर तिया ऑल बेल को दो बिना गया मेनकान सेमी ऑफिशियल से पूरी दफ्तर तिया ऑल बेल तो बांग कना दफ्तर तिया कमी कसनी साउते आपको बेहाई के उका को हुयु काम उना को घटना रे ऑल बेल लिखा जोखा विवरण हो उना रे को सेलेक्ट करा नोआ बार लिखाना उइहर वर्ड कना. But where are the Santals in the archive? That's a very important question. Ado noa archive ria murai re horpon ko ukata hisra mina koa noa ge kukli do. And I find that the Santals in the early pioneer era, they are mostly in the collection, in the archive. First generation literate, they are mostly there in the monthly magazines of the Danish and Norwegian and American mission, where they are writing as newly Christianized. Ini panjang kita hal samta murai re hor hopon ko do na kore bina ko meta me unko buniyadi missionary era re unko pioneer ko jug re hor hopon ko babote डेनमार्क रिया नॉर्वे रिया अमेरिका रिया उका अनोल सकाम को छापक कान तहे कान ओंडे नावा गे इसे होरा को अपना रका उतियो कान होड़ को लेकाते होड़ हपन बाबत ते जो ओंडे ऑल चढ़ाव कथा को मेना. So it's important to understand that to publish voices of the converted Santals were very important in our part of the world. For us, our forefathers and foremothers, to begin to imagine who were the Santals and why should they become members of committees or donate in the church on Sunday services. So you must understand this was a very important category of sub-literature in the archives. Ona archive re ka ale disam ren mission ren hor ko lagi katha tahe kan unko do nawa akoy patiyo kan ko nawan diswasi ko chik ko menda unko aram unko menjom unko udisura ona chapate ol sodor do adi nijama adi mohotana khas kami tahe kan takwa उनको नामा विश्वासी को चीक को पतियो कना चीक को मेन चुईदा उना दो अकुआ अनल सकाम करे और चढ़ाव दो उनको लगी दो अडी मारान को नीरिया मिटन हिस तहे कना नोआ बुझो हुई तबुना. So it was only later, let's say from the second generation onward, in the next century, the 19th century, when gradually Bleie became leader of the mission, then you got new, quite well-educated Santals within the church who were highly literate and began also to write sometimes to the committees or to the church, the mission leadership in Dukka, and also quite some of those correspondence which originally was at the church office in Dukka are now transported to Norway. I don't know if you're aware of that, but Dr. Hodne was behind this. उनका लिखा तो कुन नेला नवा मुरई खन नवा विश्वासी अकोय को उचोले एतो हबरे उनको ता पीढ़ी दो बांग मेनकान उनको रेन दूसरा पीढ़ी रेन नवा पतियो कान को अकोय दो अलग पढ़ाब से को लहाय ना वेल एजुकेटेड मन मेन दारे के को अलग पढ़ाब से तो अडी लाके हर उनको दो ऑल एक कान तहे कना को चिठी को ऑल एक कान तहे कना आर ना बिलत दिसम रेन मिशन रेन अकोय चले को तहे कान उनको साथे चिठी को एमएपए मो कान तहे कना आर ओना को तलाते उनको मेनजोंग उनको हुदिस को अडी मौज ते बन नेल रूम दारे किया. So then when you get to correspondence between First and Second World War, a lot of things happened here in India, in the mission and in the church. And in that period, with the changes, because by then, the whole mission, which started out as an Indian home mission, had already been, in my view, they took the home mission from here. They took it and they claimed they were the home mission. And peculiarly enough, they did it in the era of democracy in Scandinavia. But it's a very paradoxical thing. They completely actually hampered the development of your local
them and taking over the leadership partly in the Scandinavian countries. You will see I'm very strongly writing about that. It's a very serious matter. और उनका लेखा तो बुन नेला 1900 शताब्दी रे से 1960 सेरमा रे गिरजर अयुरी लेखाते बोर्डिंग साहेब तीन रे लहायना आसोकाइते पहिल धरती लड़हई और दोसार धरती लड़हई तला ओते रे ओका चिट्ठी को ऑल एपेम काना नोंडे और नॉर्वेरन चलव को तला रे ओना को नोआ नेल उरुमो काना एतो हपरे ओका दो अपेरन हॉर को लगी इंडियन होम मिशन ताहेकान ओना इंडियन होम मिशन रे अइदर ते दो हताव उचड़ चुईना और नोंका को उदिस किदा जे ओना दो इंडिया रे नुको हॉर लगी आलेरन हॉर को मिशन कना बड़ी हाहाड़ा घटना कना मेनखान नोआ गे होई कना नोआ दो डी बैग भागना जिनिस कना I could say much about this, and there's a lot on this particular matter in my book, because the change into an international society and with the new era after Bleie, with more conservative theologian in the leadership, there was the beginning of the problems of the churches today. That's when it began. In the late 1920s and early 1930s, some very important decisions were made, like seats or person, which has since troubled your institutions. और उनका लेखाते बोर्डिंग साहेब खन एहो अकान नवा एरा से नवा जुग एहो एन उन रे गिरजरिया अयुरना आंते ओका बनोदल होयेन ओना बनोदल गे अडी मारान मिटन अनाटा कोई सिरजो किदा नोआ बाबते इया नोआ ऑल पुथी रे आइमा कथा गे मेन कदा मेनखान ओकान ऑल का उना बाहरे हो आइमा कथा नि रोड दाड़ी किया मेनखान ओका को बनोदल ओका को फेराव है एन और उना होते ते तेहे गिरजे ओका मुश्किल रे मेना ओका अनाट रे मेना उना अत्रिया ओना हालात रिया सिरजन दो उन ओक्ते रे गे बोइलेना 1930 सेरमा करे से उना रे आडे पासे So the book has a huge history of what I call the increasing conflict between what I call the ethno-nationalists in the church, mainly Santals, and universalists in the church and mission, mainly the European missionaries, the Bengalis, and a few Santals and Moros. So that's how you gradually over the decades got a very, very tense conflict within the church and the mission along these lines. और उन वक्त रे गिरजरिया चलाव होरा रे धर्म होरा अंत नवा हुदिसान को है इना और उनको हुदिस को दो तकी ᱧᱟᱯᱟᱢ ना मित दल दो आकुआ जतियरी गिरजो लेका को हुदिस किदा ओना गिरजो दो चलाव बना और मित दल दो धरती जकात तलारे सानाम मनवा को लगी ओना मिशन से ओना गिरजो दो चला नोआ बारिया तरफ रिया ओका हुदिस होरा रिया तकी ओना ठपा ठुक के नोआ मारान अनाट दो सिरजो किदा Okay, but back again to the colonial archive. The colonial archive has a lot of evidence of all these things, the decision making. Why some decision making created conflict, why others were not conflict generating. But I have gone into all these materials to understand why the church became split in the early 1970s, tracing it from decade to decade. And of course in the 1940s you got your first internal voice which really challenged the white side. He was the first. और ओना लेकाते नोआ कॉलोनियल आर्काइव तनखी कते इन दो नेल चु पाट होना जे नोआ ठपाटू नोआ हुदिस होरारिया तपकी नोआ होतेते ओका अनाट को सिरजेउ काना आर गलिसियो दो हटी नेकाना 1970 रिया ओक्ते करे ओना रिया गाहाव रका ओना रिया नागाम जाओ दशक किसे दशक चिकाते 1930 रिया सेरमा को खन एहब काते नित रिया मुठन का 70 साल करे गिरजे हटी ᱧᱚᱜ तेबो नेलदा नित चलाव दी काना ओना इन दो नथी को तलाते उदु आबो नि गुरुम को कदा
And it was a very tough job for me to find evidence about that Santal. Very hard. And I searched a lot to find that material. And I'm very glad I found it. And I found also his own writings to the church leadership in Lucca. And I followed what happened, right? All the correspondence, and until the end when he was ousted. So there is that story in quite detail in my book. Noa kami, noa susutrau kami do ini lebih do di art kami tahan kana, di hamal kami tahan kana, আর noa tepeki kriya nathi juga oka biboron ko sendra nyam do di marang kami ke tahan kana. मुश्किल के निके उलेदा मेनखान इंदो नोआ कमी रेदन सक्सेसफुल लेना और नोआ मारांग कमी ओका वर्णन का नहीं युकारे विवरण ओना दो को नेल दाड़िया और ओना को सेंद्रा नाम कते इंदो इन्या कंदरोन रे सेलेक्ट करा. So the final definition features with the colonial archive is that also that it is variably preserved, you might say. Some are quite well preserved and some are in a quite good condition, and I found the same in Oslo, that this historical archive. Some was in decent shape, the oldest one from the early pioneer era was so brittle that I did not dare to open the bundles, and those bundles had been tied in Lucca when that part of the archives in Lucca were sent by Dr. Hodne and the leadership to Oslo. So I did not open them because of fear of destroying that material. और लोका को रखी जुगा दस्तावेज कान ओना को दो इन दो अडी ओरे ऊपर इन नेल का रहो ओना रिया मीटन पाटा दो इन दो बिन होटा इन बगिएदा ओका दो तायम तकरिया सेरमा करे दुमकारे डॉक्टर हॉटने रन गोड़ को होते थे तोल मोटरा कते हाना दिसम ते कोलेन और ओना दो अडी मोजते दो बाल रखी जुगा ओकान मेनखान ओना को मोटरा को रड़ाई देन बतोरना इनते पासे रड़ाई रे ओना दो गेजेरो से ओना को दो कटिंग रे बिखरे निरो ओनाते मुझे उतर हत्या करे ओका को नथी कोल लेना ओना रिया मोटरा को दो इन दो बइन रड़ा लेना. So finally, about the archives, right now I wanted to say that in deciding which archival materials I should focus on, I chose to focus on official business correspondence. I have focused on semi-private correspondence over 3 continents, and also I have focused on Christian literature produced in India and Scandinavia, like travelogues from Santal Parganas and Assam and so on, and also, of course, annual reports and all of that is there, semi-private letters, and also the so-called hagiographies, that is the biographies on the pioneers, which elevates them to heroes. That is called hagiography. So that's propaganda. So I focused on these kinds of material in the collections. और उना आर्काइव रे का तेतेक को उना दो इंदो आइमा लेकान चरित्र रे से पाटा रे हटिदा मिटन तो हुयो कना हड़पन को बाबते का ऑलवेल मिना उना ऑलवेल ओका दो हुयो कना धर्म को चार को कमी उनको ओका मिशन कमी रिया ऑलवेल को हिसाब नथी को उना को उनको पतियो को धर्म बाबते ओका को उथी को ऑलले और हेगियोग्राफी को हम उना तला रे ताहेना जे उना दो मेन किया पहिल उनको पायनियर को से हप्ताम को अकोय को ताहेका उनको जीवन चरित तलाते आको धर्म पतियो कोसना रिया मिटन पुंथा लेकागे और नोंका लेका उन मोने गोटेन हिस्ते उना आर्काइव दो इंदन हटी नेल न्यामना. And also I have been in Copenhagen in the National Archives because the Dan Mission donated all their materials to this public archives already about 20 years back. They were quite early, while the Norwegian Santal Mission had retained it as their property in Oslo. That's why I was invited there, and I have also pushed them to donate their archive to a national
archive in Norway, and now that has happened after so many years of reluctance. So now it will be available, so also students and scholars from here can, within a couple of years, go there and use this material. और इन दो डेनमार्क रिया भोगनगरा कोपेनहेगन ते हम संगार लेका उनकुआ नेता ते एंते उनको दो मिट इसी कान सेरमा लहा रेगे अकुआ अपन निजी आर्काइव ताहेगा मना दो पब्लिक डोमेन रको दान लेका ते को एम चाल किता और मिट इसी सेरमा गन लहा रेगे उनको दो उना दो और को लगी अवेलेबल को बनाओ किदा उना लगी इन को नेता ले दिया और नोआ कमी गे 80 दिन तायोम ऑस्लो रे दो नॉर्वे रेया का नॉर्विशन रेया निजी आर्काइव कान उना दो और को लगी पब्लिक डोमेन रे को एम किदा नित दो बना के पब्लिक लगी न्याम रंगना I have also been in America, in Minneapolis, and looked into the archive of the American mission and also interviewed retired missionaries over there. और इंगो अमेरिका दिसम रिया मिनियापोलिस रे ओका WPL रिया ओका अकुआ निजी आर्काइव मेना उना हन हिरितियो ओकादा और उना रे हर अपन को तला रे अकुआ कमी बाबते ओका नथी जोगा दस्तावेज को मेना उना हन हिरि ओकादा. And of course I have been in the archives in Oslo, for sure, where you have the manuscript collection, including the guru's own, the huge part, which is the guru's own writing. It's not what inside, it's the gurus who have written that. और इन्हें छड़ा काटे हम इंगो ऑस्लो रिया ओका आर्काइव का नाम हिरी उकाट की ओंडे ओका तीते और गुरु पुथी को मिना उना को अपन बुझाऊ मा उना तो गुरु को अकुआ कथा कना अकुआ तीते और चढ़ावा कना उना तो बोर्डिंग साहेबा और उचुड़ा से एटा जहां साहेबा और उचुड़ा तो बांग कना अकुआ मेन जो अकुआ नागा अकुआ तीते को और कदा उना तो इन दो ऑस्लो रिया आर्काइव में हिरी उकादा. And I will in a little while tell you more about the manuscript collection, because it's very important that you understand what is in the collection. So that I will return to next, please. Here I summarize so far what we have been discussing, my scientific understanding and how I have been, you have to take next map. This is the summary that I found that there are blind zones in Norwegian and Santal public memory. There are certain gaps there which needs to be filled. And also, because of this, I decided to write this book, which is now out, as what you can say a mixed text in English, which tries to address and reach different readerships, both here and in Scandinavia. And noted the part of the you can Galmara, Una Galmara, we have partner to noted the Borno Nakata, Ona Borno Talare, Oka Yamaka, Una Yamaka Talare, Okakura Paku Mina, Okakura Takeku Mina, Unaku Baboteha, noted the all Kata. So, please next. So here you see then how I have rewritten our history. What are the sources I have used to achieve this? I have been in the mission archives in Denmark, in Norway, in Minneapolis. I have gone into the published mission history in Norwegian and Denmark. And mind you, I have also done a lot of oral interviews here in India and Bangladesh with oral custodian, what they remember of, the legacy of the ancestors. And of course, I have gone into the classical works of Odinson and Kyra and others. And also, I have particularly visited a number of mission stations and interviewed the people who live on the mission stations and near to the mission stations who are congregational members. Distance journey you have done and you have delivered very, very important matters of Santal's languages and Santal routines, books, which you have nurturing and also studies and you are presenting to us, which we
And for that we have very much continued, and we have enriched with your presentation and your all the speakers you did to us. And we are for body, and now you see really we are Next question on for her rigorous book, because I really found it insightful as a young researcher. While I was researching, even in the process of researching, there were many gaps in my knowledge which I felt were filled up to some extent. I hope an extensive reading of this book will help you further. There are a lot of cryptic names that I wasn't able to decipher or understand who this person exactly was. And I found answers to them today, so I thank you for that. I hope this book will turn out to be very useful for you. I hope so too. Hi madam, I'm Santal, and thanks for your wonderful presentation. And you have presented us a wonderful book, as we have went through us the outlines. And you have mentioned a lot of things regarding culture and heritage. Ma'am, I have one question. The book only mentions the Scandinavian missionaries work, or their type of the way they make it preserve all these things. Is it mentioned on the book, or is it like what they have collected during the time? As they have to work for us, or is that mentioned on this book? Well, I don't know if I exactly understand you right, but I can say that in terms of, if you think, are you specifically commenting on the collections only, or Yes. on the collections? Collections. Okay. Now, on the collections, there is a huge chapter 11 on the collection, which is free access if you Google it on the net. And that chapter will also go into the process of how everything was collected with the Bodhisattva and the gurus, how he trained them, how they did it, how things came to Norway mostly, but also some other museum, how it was classified in the museum, how it was stored there for more than 100 years, why it was stored in certain ways because of wars, because of colonial history and all of that, and how finally Santal, for example, as your man, came and catalogs the manuscript, which was in a mess. So I'm really following it from it began in Santal Parganas mostly, but also there is some from Assam and so on. And not only that, I also introduced the international human rights law, because I'm an international human rights advocate, right? I worked a lot internationally with indigenous rights. So I'm also drawing up what are your entitlements to this collection as the source community back here. Okay, because that's part of international law. So, and I have used that, of course, when I advocate for this institution to improve the access of US external users. And then, as I have traveled with this and told of it, now there are more interest here about the collections, and there are people here in Calcutta who say it should come here to West Bengal in a state institution. And then when I am in Santal Pargana, some claim, yeah, it must come to Ranchi. What can come to Ranchi? Because the manuscripts are in a very poor state, so they cannot come back physically speaking, but of course the digitized version can be better distributed. But in my view, the best thing, but that's a long-term project, would be that perhaps a replica could be made of the ethnographic collection, and there could be a heritage center here with replicas, and that could also be made with craftsmen
here, and also linked to sort of innovation of the craft, not just for the collection, but also for innovation of the craft. And might be the stone tools also could come back, because the stone tools are not in a critical condition, they're in an excellent condition. But then comes the thing that the archaeologists say, we don't know that it was the ancestors of the Santals who made the tools. Yes, they're from Santal Parganas, but it could be some other early people, right? So that's their argument. But in my view, there is quite some credible evidence that also your ancestors were tool makers of this kind. And this new PhD by this Bengali PhD scholar here in Calcutta, I think also lends evidence to that. So now the question is how to create institutions here where you could have quite some of your things back. Okay, so that's a big discussion you have to take with the institution here and in Norway. And I didn't have time for that. It's very much in the book also. And actually I'm amazed so much by your information, a lot of information I get. I didn't know much of the information. So I'd like to know, though you have mentioned slightly, and the methodologies. So what are the methodologies you have employed in your research? Right. And what kind of counter argument you are giving against the existence argument, that not exactly argument, existence, the narratives which the Scandinavian business have given to us. Right, right. Okay, to say it in a very sort of brief way, my methods have been combined, right? I've used archive research, which is kind of qualitative research, right? I showed you how I have classified and systematized and copied some, because it's a huge thing. If I should take everything, I would have needed 4 lives. I have 1. So, and then in addition to that, I have used, of course, other people's works, secular work, missionary work, etc., etc. I have used my own works because I've been writing on these issues before, and I have here, like I showed you, right, this 2005 book has a lot of information on land conflicts in Bangladesh, among the other bosses, because I've done a lot of research on that. And I have researched on land use systems of the Santals now, and when you still have your salt forest. So from that, for example, I could draw that when the missionaries came first in 1887 in the spring, and they found this wonderful jungly plateau, which was called Benagaria by the locals. They call it Ebenezer, that's a Christian name, right? They thought this was pristine land. They thought it was like unused jungle. I don't buy that. This was actually the pastures of the communities around. They used this, I'm sure, for pastures, for collecting of jungle products, everything, because it was so near to the communities. But the missionaries, who were informed by the colonial mindset, they thought they came to pristine land. And I taught them, and we can, by God's blessing, let's settle here. My story is absolutely different. I analyze everything in the colonial historical context, how they acquired the land, the problems related to the Hoon, which made it somehow, to some degree, the change were quite desperate for allies. And somehow, especially Kairab was a very clever person, right, in terms of very quick acquiring Santali. He was a very charismatic person, and also he came himself, right, from a tenant's family, because he was from a very poor background and had also been in jail. So these are the beginnings, but of course around that there is a huge colonial setting, which I explain also how then the mission became so rich. It has to do with the land settlement, which went on until 1909. So all this now is properly analyzed in the book, I think for the first time. And the missionary and the theologians don't have an eye for this kind of thing. No? It's not their thing to analyze political economy or colonial societies. And also, I think
establish some kind of local, sustainable system by own donation. So it was actually Santas from Bulgaria area who also sent funding so that the mission in Malta and Genastur could establish. So they had their own capacity. And of course, when the colony was established in Assam, they had a pretty good system of self-financing. So what I'm arguing is that the shift towards home mission, so-called, from Scandinavia, America, actually completely undermined these structures which was about to be established here. And also the missionaries were somehow clever enough to kind of say that the Santal church is a thing of the future. Let's build the church sometime in the future. It's a lie. The church was there from very early, but they didn't recognize it for that, you see, because of their mindset. I have to say it, I write about it. So what happened was that they ignored the possibilities of the Santal church to become a self-sustaining, low-key institution which could actually function quite well in your communities. So instead, the church gradually became something very else, modeled on our folk church ideal from Scandinavia. The hierarchical, quite expensive church structure, something very else, and mostly then funded from the north, with the money coming here, making you completely dependent in many ways. So I think that is a new thing I am documenting, I think, with quite a lot of evidence. And also this thing about